start the journey. Anybody has any questions? किसी ने कोई query, कोई किसी का how is the 2 days? कुछ समझ में आया? हम लोग जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं. Did we understand what we are trying to share? अब तक तो बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. So far so good, sir. Okay, now the third thing is obviously now today we will come into returns. कि अगर हमें शेयर लेना है, एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में कि हमें सस्ता लेना है. Yes or no? Do you understand the सस्ता लेने वाला कॉन्सेप्ट? Yeah. Who understand what is the meaning of सस्ता लेना? सस्ता लेना मतलब वहां से आगे बढ़ना चाहिए. It is the time that appropriate time to buy. Appropriate timing, sir. This is another big problem. There only one person can do timing. नहीं सर, वो बात नहीं है. देखिए मार्केट वो वाली तो कोई भी वो नहीं कर सकता है. That is the sudden things, suddenly so many things happen in the market. But those who study into the technicals and all, they with the graphical or maybe you have your own way of finding what could be the say if this is the right time to buy. No, this is the value today. But you expect it to maybe that if it falls by 20% or maybe 30%, then that will be the right time. So maybe the market or no market, but then once you decide 30% fall and you will buy, so we'll wait for that time. So basically it's very, very simple. What is valuation? Valuation is कि वो शेयर क्या है, हम कितने उसको वैल्यू दे रहे हैं. That is the query. So the simple way for valuation today is, which everybody does, is P ratio is the simple way to value. Right? The simple way to value is P ratio. Yeah. Are we understanding? Yes. Right? So the simple way of valuation of P ratio is a very important concept जो हमें समझना है. हाँ, मतलब ओवररेटेड नहीं होना चाहिए. तो ये मैं बिना पहले पूछ रहा हूँ. तो यूजुअली अगर आप लोग शेयर लेते हैं तो हाउ मेनी पीपल सी पी रेशियो, मेरे को ये समझना है. कितने लोग पी रेशियो देखते हैं? Not always, because one of your webinars I'd heard you saying that it is not always the sometimes even an overvalued share is bought because the company is good or the prospects are good. Sometimes even the overvalued. I heard one of your webinars only I was attending. So I said overvaluation is not always the criteria to reject your buying of a share. So it's not always. आप समझिए, पहले मैं अभी आप मेरे से जो सीखे हैं, one of the criteria. Okay, हरेश जी क्या देखते हैं? Let's study from हरेश जी. हरेश जी, what is your idea when you buy a share? Do you have a P ratio कि 30 के नीचे लेना है, 20 के नीचे लेना है? Do you have a? Yeah. So basically, when we see the P multiple, I usually for a particular company, I see the industry P multiple also. Okay. So whether industry P multiples we compare, because all the industries having the different P multiples. And so for example, banking is different. Then you have the and as you know that if you see the application P multiple दिखा देना एक जगह है क्या अपने पास कि वो अलग-अलग दिखाना पड़ेगा? अपने पास तो है ना P multiple सबका. P multiple. So in the industry wise P multiple. Industry P, sector P. या सेक्टर P है. एक जगह है क्या कि अलग-अलग करना पड़ेगा? एक जगह है, मतलब एक जगह. एक जगह करके लगाए. And I also see the peg ratio. Okay, peg ratio ठीक है. So that peg ratio and P multiples, it will give, that is a couple of criteria actually. It's not the only criteria. तो P कितना देखते हैं? नहीं, वो तो P कितना देखते हैं? So P multiples, again the industry, I compare with the industry P multiples. हाँ ठीक है, समझे कोई कंपनी इंडस्ट्री P 40 है. इंडस्ट्री P multiples 40 है. हाँ, और इंडस्ट्री और शेयर का P 30 है. Okay. तो ले लेंगे क्या? नहीं, ऐसे no, एक only one criteria I will not go for. एक criteria से नहीं लूँगा मैं. और भी criteria देखेंगे, but समझो और सब criteria है. हाँ. I'm giving an example. समझो और सब criteria है.
So what you decide on the P, मेरे को समझे सब criteria है. I'm giving an example. Yeah, so I will investigate कि ये P multiple कम क्यों है पहले. If the industry P multiple is 40, okay, and ये company का P multiple 30 है, तो कुछ तो reason हो सकता है ना, whether the management quality is bad or good or something like that. We need to find out the reasons why the P multiple is less, first of all. Okay, you know, very good. कभी कभी क्या है मालूम है, sometimes company gives the surprises. I don't like surprises, let me tell you. So for example, you know, कोई बार एक कंपनी प्रॉफिट में है, ऑल ऑफ सडन लॉस में आ गया, वापस प्रॉफिट में आ गया, तो यू नो इफ यू गेट अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर विल पनिश द स्टॉक. Investor will not give the higher P multiples. Basically what you're discussing right now, okay, let me repeat, because हम लोग 2 दिन, you know why I was focusing on quality, because the companies which we are suggesting, they don't go through this problem of loss, profit, loss, profit, loss, profit. So the companies which I am suggesting, 127 companies, if you see their history for 5 years, they are very stable. होगा 2-4 कंपनी हो सकती है, 5 कंपनी. कोविड छोड़ देते हैं, कोविड वाज अ डिफरेंट सिनेरियो. उसमें भी सब कंपनी में सब में लॉस नहीं थी, 10-12 कंपनीज में लॉस थी. सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हरीश जी, कि पहले हम लोग क्वालिटी में फोकस करते हैं, जो हम लोग 2 दिन नहीं करेंगे. मैं 2 दिन आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया हूं क्वालिटी में विद एवरीवन. राइट, नाउ माय फोकस इज क्वालिटी इज डन. समझिए, आपने क्वालिटी फाइंड आउट कर लिया. ओके, मैं अब उस पे आता है, क्योंकि मैंने आपको क्वालिटी की ट्रेनिंग दे दी, करेक्ट. और समझिए आप भी डिसाइड कर लिए कि क्वालिटी स्टॉक्स है. एग्जांपल, नाउ हाउ विल यू डिसाइड टू बाय अ स्टॉक? मैं ये समझना चाहता हूं. मैं क्या देखूंगा, P bands देखूंगा. So there is called a P bands, upper bands and lower bands. Okay. And based upon the upper bands and lower bands, at least I will come to know the historical P bands is something like, say for example, it is ranging from say 20 to 40 P multiples of that particular stock. और इसका P multiple समझो कि 25 है, तो I know that at least, you know, ये 30 तक तो पहुंचता है on an average. So at least I can at least make out something that okay fine, this is actually undervalued. अच्छा, आप अंडर वैल्यूएशन वैसे डिसाइड करते हैं? It's not only criteria, I'm telling you, based upon the P multiple, P bands देखता हूं मैं. हम समझ गया, मतलब you see the P bands. Okay, very good. I just want to understand what you see. Anything else you see? समझे क्वालिटी है, हरीश भाई, पहले उसको डिसाइड कर लेते हैं. Right. तो हमने 2 दिन से समझे क्वालिटी है, और क्या डिसाइड करते हैं डिसाइड करने के लिए? So quality है तो खाली other than P, तो there are so many factors I see, the cash flow and all these things, the free cash flow. क्वालिटी आई गया ना, वो तो क्वालिटी देख ही ली हम लोग. वैल्यूएशन में क्या डिसाइड करते हैं? वैल्यूएशन में all this, so they जो intrinsic value of the company, for example I have seen many companies like in addition to quality, for example one day I picked up say for example say Tata Chemical जो बोल रहे थे, example if the Tata Chemical is it comes under the quality, I see what is the quality of their you know fixed assets, current assets, and I see also the you know the investment also. For example, they are holding some the shares in the Tata Sons. Those are quality parameters जो हम लोग कर चुके हैं. समझिए, Okay. आपने कंपनी देख ली और वो कंपनी में क्वालिटी है. Right. मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कंपनी में क्वालिटी है. ओके, तो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखता हूँ कि फ्लोटिंग स्टॉक कितना है. ओके, फ्लोटिंग स्टॉक कितना है? ओके, फ्लोटिंग स्टॉक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो समटाइम्स लो फ्लोटिंग स्टॉक यू नो हाई क्वालिटी कंपनी you know वो भागता जा रहा है. समझो, if the result comes good, no, you know if it is a low floating stock, definitely you know even थोड़ा भी purchase हो गया ना तो भागेगा stock. ओके, ठीक है. ओके. So basically that is your idea of a thing. Anybody else? Let's see. Anybody else? How do they decide? समझे, क्वालिटी है. How you decide to buy a stock? Now that is a key area which you have to learn, जो मैं आपको सिखाऊंगा. Anybody else? क्या देखते हो लोग डिसाइड करने के लिए? और मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, friends, if you can share please. Hi sir, I'm Zahir. हाँ Zahir जी, बोलिए. So other than the qualitative things that you've enlightened us with this time, I also look into 3 other criteria actually. One is the volume, what is being traded.
The next is relative strength indicator. So Okay. we can look into different time frames. Usually it depends on the holding period of the share that I want to buy. If I Okay. want to buy a share for say a week, I would look at a chart like a 30-minute chart to understand the RSI. If I want to buy a share as an investment, then I would look at a weekly to monthly RSI to just understand overbought, oversold, where we are standing with the price. Next would be MACD also. So that's moving average convergence divergence. So we can understand from the blue line when it is kind of trying to break out. So those are also several other factors that we can consider with. Okay. Okay. Fantastic. Fantastic. And somebody was saying 3-month low or 1 month 10%. Brahma Rajuji, what is it? You have given me a direct message. Sir, कोई secret तो है नहीं. Brahma Rajuji. Sir, हाँ जी. if any good stock which is lesser than like yesterday or told TiCare is we will get out of 50% less than what it's a good company. Like those companies I will buy. So far in the pandemic time I do the same thing. I get the stocks, good stocks. I get money from those guys. So what do you see? You see what? 3-month low. Yeah, if any good stock is if any prices are low, I will buy those stocks. Prices are low. Yeah. Okay, so basically you buy at a correction. Yeah. Yes. Okay, you buy at a correction. Okay, good. Yeah. So Venkatji, trend reversal point, retracement levels. What is it, Mr. Venkat? What is this? So trend reversal, I'll see that if a good stock over a period of correction, it is trying to reverse its trend from a negative trend to a positive trend. That would be my very sweet point to pick up. Or other times, many times the stock retraces after making a low. It is having some like example the Fibonacci retracement levels. So that would also be a point that I see that many a times it goes to the retracement level and from there it's bounced back. These are all my sweetest points to pick up for a good stocks. Okay, and how do you select the stock? Based on this quality. Quality would be my first one. Basically, you see my quality and then you use technical analysis to buy those stocks. Yes. Okay. Anybody else? Sir, Yes. I always buy the stocks at the golden cross of 50-200 for a longer run. Okay. And for a medium term, I always buy the stocks crossing 20 and 50. Okay. So how do you decide which stock? I always look at the high multiple P stocks. High multiple Normally. How multiple P stocks means? Yeah, just like where we have to pay more, all the time the stocks will go because the intrinsic value of the stock is more, right? So the stocks will go after some time at certain level. When you hold, what is your holding period? Normally 3 to 5 years. मतलब उससे आप 305 साल डिसाइड कर लेते हैं. Yeah, because when it crosses the golden cross 50-200, even the Nifty you can see when it has crossed 50-200, it has gone to 13,000. From 10,000, it has reached 13,000. Okay. That is the main criteria, golden cross. Okay. Of any stock or any instrument. It has been decided in a number of books which I have read, and I have seen number of stocks are rising after crossing 50-200. What is your experience? Kabhi lost nahi hua strategy mein? No. Normally no, when never lost. Never वो stock kabhi niche nahi giri golden cross ke baad. Because I take the stocks which are having a market capitalization more than 5,000 crore or something like that. So that is the top. You are buying 20. The top 200 stocks only. Yes, only 200 stocks only. Okay, understood. Yes, what is the golden cross actually? I am not aware about technicals. We are not here. You can search yourself. You search yourself, Harish bhai.
नहीं तो हम लोग आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। I अच्छा also ठीक है don't know what is a golden cross. आप privately उनका नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिएगा। ओके ओके Or in WhatsApp. Talk to Sir, call him up. sir, I missed one point. Basically, I also see that major support levels is also one of the criteria. Major support levels. Okay. Anybody else before I share my views? Anybody does? Anybody knows how to find the intrinsic value of a company? yes I know. How do you find intrinsic value, Arishna? So we do a lot of approach, income approach, market approach, mergers and acquisition approach. Because I have done the valuation of so many private limited companies also and public limited. So we do the DCF discounted cash flow technique. We use the public comparables and then to find out the intrinsic value of the company. There is called a replacement cost model where we do the valuation as per the. Give me any listed company. अभी कोई listed है? आपको ने किसी का किया? Can you tell me the value of any listed company in NSE? मैंने किया है. In fact, I have done for we compare the Infosys versus Wipro versus HCL Technology. तो मेरे पास पूरा workings है उसका. I can send you that. नहीं तो किसका क्या valuation निकला? So the Infosys का valuation. So Infosys का what we did actually we did a retail valuation. We did also, if you want to acquire the Infosys, what should be the valuation where we have to add a control premium. And the so उसका Infosys का valuation जब भी 600 रुपया था तभी मैं 1100 निकला था intrinsic value. So it is above intrinsic value. Wipro का valuation अभी overvalued हो गया क्या? अभी overvalued हो गया? Overvalued as per the income approach. Okay. As per the income approach, yeah. So again, valuation is an opinion anyway. So for example, what discounting factor you are using and all this. There are so many factors are there when we do the valuation. So then we if you see if any person is valuing the company, valuation is a science as an art also. So science means what is the whatever formulas you put and you get the value. And then we do when we tweak also the valuation depending upon the for example the other factors are also there. We increase the discounting factor, decrease the discounting factor as and when required. So okay. Yeah, I got the idea. So I know I'm good. Okay, thank you. Okay. Girish, I always buy stock from long-term period for 1 to when 50 SMA crosses 200 SMA on chart. Okay. So इसमें क्वालिटी नहीं दे. अच्छा 5000 वाले 5000 करोड़ के ऊपर देखते हैं तो उनका वो थोड़ा बच जाता है. You only buy companies above 5,000 crore, right? Yes, sir. Yes, sir. Above 5,000 crore. Vikash, how many companies are there above 5,000 crores in India? Maybe only 300, huh? विकास वो साइड व्यू नहीं आ रहा है क्यों मेरा आज 367 विकास मेरा साइड व्यू नहीं आ रहा पूरा कवर हो जा रहा है कैसे रोज ठीक आ रहा था आज नहीं आ रहा करिए डबल क्लिक करने से भी नहीं आ रहा है इसमें डबल क्लिक करें बस स्क्रीन पे नॉर्मल स्क्रीन पे हाँ आ गया थैंक यू हाँ 367 सो बेसिकली वो सिर्फ 367 कंपनीज में शेयर खरीदते हैं ओके नाउ सर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर I think so what if you really want what is the objective जो objective is कि हम लोग का returns आना चाहिए yes or no friends yes sir we have to get the returns yes sir that is the key aspect correct so हम लोग को quality stocks तो लेना ही है which we have decided कि हमको 150 stocks में खेलना है अब 150 stocks में हम कौन सा स्टॉक लें जिससे मेरा रिटर्न अच्छा हो करेक्ट तो एक माइंडसेट है सब लोग का देयर इज अ माइंडसेट ऑफ पीपल दैट आई शुड बाय ओनली लो वैल्यूएशन स्टॉक जिस स्टॉक में लो वैल्यूएशन है उसको हम खरीदें दैट इज द की एलिमेंट आर वी कम्युनिकेटिंग
फ्रेंड्स आर वी Yes. राइट? तो हम लोग का एक तो आइडिया रहता है कि हम लोग हरदम सस्ता शेयर खरीदें. ओके, नाउ दैट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ, that is a good criteria and I will show you. So you have to build in, one second, friends. So friends, what is important is that एक मार्केट में हरदम एक रहता है कि मुझे सस्ता लेना है. करेक्ट? सो पीपल हैव अ कॉन्सेप्ट, ये मैं नेचुरल बता रहा हूँ. So definitely some people are using technical analysis to buy a stock, which is a good thing. But in fundamentals, the most important thing is that you have to understand the value of a company. Okay, how do you value a company? What is the meaning of valuing a company is कि उस कंपनी का अगर कोई वैल्यूएशन है, अगर हम क्या उस वैल्यूएशन को निकाल सकते हैं क्या? Okay, so there are two kinds. When you earn money, विकास वो अपना वो दिखाएगा क्या अपना PPT 5 principles? 5 principles बेटा फ्रंट पेज. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग ने ऑलरेडी LNU आपके साथ कवर कर लिया है. सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, फ्री कैश फ्लो, ये हम लोग ने कवर कर लिया है और ये हम लोग ने इसको बना लिया. नाउ देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट is beating the benchmark. Is there anybody here who has beaten the benchmark? Not in a short term, regularly वो year on year बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं. बेंचमार्क समझते हैं आप लोग? बेंचमार्क मतलब निफ्टी अगर 20% बढ़ा है तो हमारा स्ट्रेटेजी या जो हमारे पोर्टफोलियो है, ऑनेस्टली हमने 21% कमाया है, एक साल नहीं, ईयर ऑन ईयर. एनीबॉडी हु हैज बीटन द बेंचमार्क हियर? कोई है जो बेंचमार्क बीट किया? Do you understand what's a benchmark? कोई जवाब नहीं दे रहा. So I'm assuming that I don't think so anybody has the capacity to beat a benchmark. So that is a very important concept which you have to first understand. What is a benchmark? Okay? So सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप चाहे कितना ही आपको नॉलेज हो, but market has certain things which is built in the price, correct? So usually लोग क्या करते हैं, like गिरीश भाई क्या करते हैं, वो गोल्डन क्रॉस खेलते हैं एंड टेक्निकली वो देखते हैं इसमें प्राइस का एक मूवमेंट हो, खरीद लेते हैं. जाहिर भाई sees MACD and he does RSI and he buys the price. Okay, so we use technical analysis to decide कि अब ये लग रहा है ये मोमेंटम देगा. Correct? Yes or no, friends? हरीश भाई P model and PEG models बनाते हैं and then he decides to buy a price when he decides. Mr. Venkat, आप क्या करते हो? मैं देखा नहीं आपका. I forgot. What you same, right? Technical analysis. Fibonacci. हाँ, Fibonacci. So basically technical analysis देख के हम decide करते हैं. Correct? एक सबसे important चीज है, हम जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं, if you have a portfolio of 20, can I know how many stocks do you have, everybody in your portfolio? Girish bhai, how many stocks do you have in your portfolio? 35. 25. 356. Harish bhai, how do you manage? 356 stocks, Harish bhai. Brahmaraju, Venkat 5. Anybody else? What is the number of stocks they have? Now I want to know, if you have 35, 5, 24, Srinivas Rao, Milind Rage, ये जो 25 stocks है, इसका total return आप benchmark को beat कर पा रहे हैं क्या? 5 years बताइएगा मेरे को.
लास्ट 3 महीना मत बताइएगा, लास्ट 3 महीना में तो सबने कुछ अच्छा किया होगा स्टॉक में, वो भी जरूरी नहीं है. Milind Rege is honest, he has not beaten the benchmark. Okay, Zahir, no. Rajesh Deshmukh, no, nobody has been able to benchmark. Harish bhai, 356 block, I challenge my life on you if you can beat the benchmark at 356 stocks. No, weight is Impossible. different. No, Shailesh bhai. See, I'll tell you the different because of weight. See, if you tell me my composition of stock, the 30-35 stock, the composition is around 85%. हाँ तो वो 30-35 स्टॉक की बात करते हैं ना और छोड़ देते हैं ना. हाँ, तो बाकी का जो स्टॉक मैंने होल्ड क्यों करके रखा था, अर्लियर डेज वी यूज्ड टू गेट एनुअल रिपोर्ट फिजिकली, तो पढ़ने के लिए करता था मैं एक्यूमुलेट. हाँ वो ठीक है, मैं बेसिकली I would say that you have 35 stocks only. Yeah, 35. So 35 is able to beat the benchmark year on year every year. Every year it is CAGR is 25 to 30%. नहीं अभी हुआ होगा ना, मैं एवरी ईयर का बात कर रहा हूँ, ईयर ऑन ईयर. ईयर ऑन ईयर की बता हूँ ना, 25%, अभी तो बाजार बढ़ा है तभी तो आप अगर करेंगे तो उसको बीट करेंगे. बट मैं बोल रहा हूँ जैसे if I had asked you on 31st March 2020 when the market fell, were you beating the benchmark? क्योंकि बाजार गिरा था निफ्टी, were you beating the benchmark? मार्केट गिरा था तभी मेरा स्टॉक गिरा था अराउंड 15%. Okay, so basically आप बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हो 35 स्टॉक्स आराम से. Okay, good. So then तो you don't need me, you are good only. No, I need you यार, क्या बात कर रहे हो आप? I always Because find आपका परफॉर्मेंस मेरे से भी अच्छा है, 5% है. it's not good. What I want to share, I always buy in top 20 stocks in Nifty having highest market capitalization. Girish, a very dangerous strategy. Very, very dangerous strategy. 1 second, friend. Even after joining your this class, normally, Yes, sir. Harish bhai, it seems to be that we need to have a separate class with you, huh? The knowledge actually here I really appreciate. It's not every day is learning, and let me tell you, I'm still a student. In spite of that, we are offering a lot of US courses, CPA US, CMA US, but still I am studying. I'm a lifetime student. I'm very hungry. Harish bhai, I also done the online trading academy course of California. Vikash, please continue. Demand and supply. Please continue. Yeah, great. Learning never stops. Yes, sir. I can learn from you also, and you can learn from me. It's like that. Definitely, sir. Why not? That's very This true. golden cross theory is permanent for anybody. भाई You वो can सिखा see दो हमको यार, golden cross सिखा Yeah, दो. It's very हम golden हो easy. You जाएंगे. just put a simple 50 DMA and 200 DMA on the chart. You will notice all the stocks which crosses 50 DMA 200 को cross करता है, so that will just go on flying. अच्छा. You can see the Nifty also. Nifty को आप लगा के देखना 50-200 ये 10,000 के ऊपर जैसे ही क्रॉस किया, it has started high flying. 3,000 पॉइंट वो निफ्टी ऊपर चला गया. अच्छा, great. Perfectly fine. So for medium term you have to just look at the 20 and 50 DMA. तो ये I think so you should demonstrate यार, एक बार एक थोड़ा छोटा small session please have, and at least some teachers how you are doing it. Yeah. So हरीश जी और गिरीश भाई, so आप लोगों ने अपने डिस्कशन में देखा एक बेस लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग था आप लोगों का. If you guys seen that baseline, what was that baseline which sir was trying to explain you guys कि जो अच्छे stocks होते हैं ना? Yeah, we go with the top stocks only. Exactly. I look at 20-25 stocks which have got the highest market capitalization in the, so वो money control में भी आप देख सकते हो. Correct. Thereafter you just put these two DMA 20, 50 and 200. When it all the three crosses, then it has to go up irrespective of any conditions. Yes. Very right.
visualize. Yeah, आप देख लेना. Correct. So यहाँ पे क्या है, what we can also do is कि जो सर बताना चाह रहे थे कि अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में ये काम करते हो, कोई भी चीज करते हो क्वालिटी स्टॉक्स में, whether it be technical analysis, whether it be valuation, whether it be anything, you are bound to get the return. So जब आप market cap, when you have done use the market cap, higher market cap होने से the risk of like there was a study which we did that today there are 100 shares in large cap, out of which 49 has good fundamental. Definitely. And great, I'm talking, 49 have good fundamental. So out of 100, 49% companies are good. Definitely. So क्या होता है? Out of 49, if we get 5 or 10 stocks which are just going up and up, you just buy those stocks only. Exactly. I bought Hindustan Lever in 2008, which when it was running near 200 to 300 rupees only. Okay. Yeah. And in 12 years, it has gone to 2,500, 2,600. Perfectly fine. So that is how quality companies behave. Behave, so, definitely. Yeah. So you have to just put in your money when it crosses to 50, 200 and just hold it. One parameter, you can have many parameters like such. So I've got one more parameter also, which I look MACD. Okay. When it is high flying. Okay. Yeah, if you just put in MACD, आप आगे का MACD देख लेना है, जीरो लाइन के ऊपर चलता है और वो हाई फ्लाइंग हुआ, then you buy the stock in 3 to 6 months or in 9 months, it may give you the double money. Okay. Makes your money double immediately. So all the discussion comes to a center point, that is a quality stocks. So which we have quality stock with this technical analysis also. Exactly, with any technical analysis or with any parameters, you can try and make it better. Definitely, sir. Why not? Yes, exactly. At presently, I have got a software of Spider. Spider software. Yeah. I am using Spider software. We'll be discussing on all those things afterwards. Okay, sir. Sure. Yeah. So let us continue with the thing. So definitely. For everyone. So what was the purpose of asking what you guys are using? Okay. Yeah. Why not? Purpose was the purpose was for making you understand that when you invest in a quality stocks, you use valuation with quality. You will be reaching at some place. Say for example, let me give you an example. Sir will be also explaining you through various models which we have created. So he will be showing you all models and all. So let me give you a glimpse of that model. So what happened in last 5 years, Nifty return was 55%. In last 5 years, 5-year quarterly summation return was 50. Say for example, it is 55%, 56%. When you are using quality, good stock, good quality stocks. So how do we decide quality? Can anybody tell on chat? So what is the best way of deciding quality now? Can anybody write in chat what we have studied in last 2 days? What is the best way to decide a quality? QBS, exactly. So value stocks, no, QBS is the best way to identify quality. So what happened? There are two areas. One area is what happened now with the 55% return in index. Now immediately when you invest in a quality stocks, only quality stocks, your return goes up by 30%, 35%, or 20 above benchmark plus 30%, which is somewhere around 85%, 80%. Okay. Now this 85% is still not exciting because this is a CAGR of how much? This is a CAGR of 16%, 15% annually. So this is a general investor return. So what happened? So what we did, we just added quality and 50% return become 80%.
We'll be showing you all those models. 50% benchmark return. So you added 30% to the benchmark as soon as you added the quality. Now, when you add momentum or valuation or growth to it, the return goes to 120%, 130%, 100%. So what happened? You come to the CAGR of, or you end up with a CAGR of 21%, 22%, 25%, even 30%. Okay. So in our most of the strategies, there are 24 strategies that we have developed. So what we have done, we have used 3 models. First, there are 100 stocks in large cap, 150 stocks in small cap, mid cap, and 250 stocks in small cap. If you take top 500, so benchmark immediately you can beat the benchmark with quality. But now the focus is to go beyond benchmark. That can be done only through valuation, action momentum, or growth. So we have discussed with you long-term quality and growth. So we'll be discussing valuation today. So there are these parameters which Harish you have also mentioned, that there are these parameters, different parameters via which you can identify valuation. So sorry to interrupt you. No issues. Have we discussed this debt to equity ratio? If I'm correct me if I'm wrong. Probably we have not touched. If I'm wrong. Yeah. So we have not discussed this. We will be discussing it in later half. No issue. Okay. Yeah. So today we will be doing valuation. So yeah. So DCF, Graham. So let us come to valuation directly. Just a second. So this is a kind of universal truth we use. Why universal truth? Because what happened, we human being, we investor are not satisfied. Once we are not reaching to benchmark return. Once we reach benchmark return, once we go beyond benchmark return, little bit beyond benchmark return, we want more. So these valuation, price momentum, and growth are introduced to provide you return much more ahead of 3 times return, 4 times return than benchmark, and that too on a continuous basis. Okay. So the stock valuation fundamental aim to value the intrinsic value. So we'll be discussing how we can add valuation and create a return. Intrinsic value of stock that shows profitability of business and in future market value. Stock valuation is an important tool that can help you in making decision for entering stock at right price and right time. Okay. So it helps you in entering stock at right price. So we will also be discussing with you what are the right prices. So these are the importance. This is the importance of valuation. If you use valuation are used as an important strategy for picking good stock at low price or undervalued price with good margin of safety. So as sir always take this example, say for example, a iPhone which is costing rupees 1 lakh rupees, which has a cost of 1 lakh rupees. If you go and buy a new iPhone at 1 lakh rupees, and if suddenly there is a sale which a particular store has announced that okay, he will be selling that iPhone for 50,000 rupees. Will this excite you? And there is no issue with the thing, and that is only for an hour. So who all are going to buy them? Okay. Am I audible to everyone? Anybody having issue with the voice? You are audible. Yeah. So what this is the kind of examples I used to take every time. That what happened, say for example, iPhone, I think the iPhone 11, which is costing rupees 1 lakh rupees, which has a market price of 1 lakh rupees on any particular day, any store has announced for 1 hour, he has announced that, okay, I'm going to give brand new iPhone, no issue, no problem, nothing. 1 lakh rupees iPhone slashed cost for only 50,000. Will this excite?
who all are value, and if you want to buy iPhone, will you rush and buy it or not? Anybody? Nobody will buy. Yes, Brahma Raju ji will buy, okay, or whom else? So this is known as valuation. So the quality, we are not sacrificing on quality. There is no sacrifice on quality. Now these kind of things happen. Now what is margin of safety in this? The margin of safety is that 50,000 rupees, which the price was 1 lakh rupees, and the store has announced this for 1 hour that he will be selling this particular phone at 50,000 rupees. This 50,000 rupees is a margin of safety for the phone. Did we understand this? If you write yes, this will help me to understand whether I'm able to make you understand. Sir, I last 5 minutes chat. Suddenly I lost the audio completely. Okay, no issue, sir. You can listen to the recording. No issue. Yeah. Okay. So Okay. have we missed any important topic or something? Nothing. Normal. Okay. So Grish ji, yes. So what happened? So now if you buy for 1 hour, so what will be the value after 1 hour? What will be the value after 1 hour? The iPhone which has a market price of 1 lakh rupees, iPhone 11 XR 11, which has a market value of 1 lakh rupees, and a store announced a 50% discount for only 1 hour, and you have coincidentally purchased that iPhone, then what will be the cost after 1 hour? What will be the price again after 1 hour? Can anybody tell me? 1 lakh rupees that you made immediately. So there was no problem with the quality of the iPhone. The quality was same, but because of any reason, the store has announced a 50% discount, and you got it at 50,000. Now after 1 hour, it's again where the value will be 1 lakh rupees. So this is what happened with valuation, that you buy when market, because of COVID scenario, because of big events like this, the stock price goes down. It's a kind that market announces discount, and after the thing is resolved, then again the prices goes up. Now it's to sir. Thank you, sir. No, very nice, Vikas. So basically विकास क्या बोलना कोशिश कर रहा है कि मार्केट हम लोग को अपॉर्चुनिटी देती है, बट क्या होता है, द इन्वेस्टर्स गेट वेरी स्कैर्ड बिकॉज उस समय तो गोल्डन ट्रायंगल होगा नहीं ना, उस समय तो लॉन्ग नीचे ट्रायंगल हो जाएगा, तो गिरीश भाई तो शेयर उठाएंगे नहीं बिकॉज देयर इज नो गोल्डन ट्रायंगल. सो बेसिकली द बिगेस्ट मनी इज मेड व्हेन ग्रेट स्टॉक्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट, जो विकास ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. सो वैल्यूएशन अगर मालूम हो हर चीजों का, तो आपको आइडिया है कि अब ये मुझे सस्ता मिल रहा है. करेक्ट. तो अभी मैं आपको 5 बहुत जल्दी मैं दिखाऊंगा आपको 5 ways to calculate the intrinsic value of a company. Okay, now this is the importance, because let's start with P. This skip Guru's on valuation, so we can go ahead. Okay, so hardam a good stock is not a great investment if you pay too much for it, right? The big money is not in the buying or selling but in the waiting. ये बहुत important है कि जितना अच्छा वैल्यूएशन का स्टॉक लेंगे, उसे वेट करेंगे तो अच्छे पैसा मिलेगा. ओके, सो कौन सी रेट में उठानी है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है. प्लीज गो नेक्स्ट स्लाइड. So these are some of the ways to value a company. Now एक और बहुत important चीज बताता हूँ. Valuation has no link with the quality of the company. This is another very important thing which you have to know. The quality is different than the valuation. Valuation is not a fundamental parameter. Valuation does not give you the quality of the stock. Please understand this important factor. Valuation is कि भैया अभी ये कंपनी का वैल्यू था, ये कंपनी का वैल्यू 15 दिन में, there was companies on 20th February which was overvalued, became undervalued
in 20 days in February and March, but the quality of the company did not change. The quality of the company remained the same. So this is another confusion. People are confused. वो लोग valuation से decide करते हैं कि company की quality अच्छी है कि खराब है. Valuation has no link with the quality of the company. Okay. So what you need to understand is that good quality companies हम लोग ने decide कर लिए. Okay. So whenever you get an opportunity to buy those companies at a lower rate, valuation is very, very important. Okay. So common ways of valuing a stock, P ratio. So obviously the simple ways, यार ये 20p के नीचे है इसीलिए शेयर सस्ता है. Right? This is a common methodology people use in the market. P 25 है तो शेयर सस्ता है इसको ले सकते हैं. But they don't know whether the company has quality or not quality. Oh, इसका P 70 है तो हम ये स्टॉक नहीं लेंगे. Now this is the biggest problem which investors do not understand. Okay. Now there are companies like Hindustan Unilever, Nestle, Asian Paints. They are such phenomenal companies. उसका P आपको कभी 60 के नीचे मिलेगा ही नहीं. And they are companies who are continuously giving 20% return year on year. You will never get these companies at a low P. So that means you will miss the advantage. Why those companies are always getting high P? Because उसका company का valuation ज़्यादा है. Because जितना अच्छा quality होगा उसका value ज़्यादा होगा. And now this is a very simple example. For example, now this is an iPhone which is at 1,20,000 bucks. But there is another phone in the market which is at 10,000 bucks. Yes or no? Why people are buying this at 1,20,000? Why not he buys at 10,000 rupees? Because it has quality, friends, quality, brand. Whenever things will have higher quality, there will be higher price to it. It is the same thing with stocks. There are certain stocks which is high quality stocks. You will never get them cheap. And people don't understand this logic. Now, let's take more examples. How many people buy branded clothes? Brand clothes कौन खरीदता है? How many people buy branded clothes? Mr. Venkat, me, Girish bhai. गिरीश भाई कौन सा ब्रांड पहनते हैं? थोड़ा कौन सा ब्रांड पहनते हैं गिरीश भाई? हरीश जी कौन सा ब्रांड पहनते हैं? लुई फिलिप्स, एलपी. एलपी क्या रहता है प्राइस शर्ट का? अराउंड 2000. वो आप 500 रुपए का शर्ट क्यों नहीं पहनते? 2000 का शर्ट क्यों पहनते? Actually, the quality is important. What you say? Quality is important. Thank you very much, गिरीश भाई. अरे गुरीश भाई, गुच्ची, अरे बाप रे, आप तो एकदम हाईएस्ट वर्ल्ड के ब्रांड में है, गुच्ची एंड लुई विटॉन. गिरीश भाई, गुच्ची का शर्ट का प्राइस कितना है? More than 5,000 rupees. 5,000 rupees? Why you buy 5,000? Why not Louis Philippe, which are 2,000? Sometimes I buy Philips also. Sometimes, na, but why do you buy Gucci? Because it's a good brand all over the world. Good brand and also good quality or not? Yes, no? Quality, definitely. So Good basically, quality. Yeah. so do you think the quality in Gucci is better than Louis Philippe? Sometimes it happens, but I like the normally those shirts. So basically it is all about quality, friends. And So giving people me the please comfort. understand कि हायर क्वालिटी को हरदम हाई पी मिलेगा. तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा. अब एक और चीज है, 24 कैरेट का रेट और 22 कैरेट का रेट गोल्ड एंड 18 कैरेट का गोल्ड का रेट, ये तीनों का रेट डिफरेंस होता है कि नहीं होता? तो तीनों का रेट अलग, सेम तीनों चीज तो गोल्ड ही है. यस और नो? व्हाट इज द डिफरेंस? प्योरिटी एंड क्वालिटी.
So please understand, higher the quality, higher the price. So you have to understand. Now Vikash, put large cap companies पर highest quality लगा दे, उसका P बगल में लगा दे. Yes. Highest quality and highest P ratio. All are above. There's no stocks below 30. 48, 38. This Aurobindo Pharma is only one. 1 at 14, 80, 56, 51, 41, 62, 101. Infosys is at 30. TCS is a little bit 36. Muthoot is at 14. But else, most of the stocks are above 30. So friend, what is important is, what we need to learn is कि valuation जितनी high होगी उतना देना पड़ेगा. अब देखो विकास, just show एक बार. Yeah. P लगा दिया बगल में, high P से लगा दे बेटा. High P. सब large cap है क्या? सब large cap. अब देखिए, there are certain company जिसकी high P है but quality नहीं है. राइट अब जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज इतना हाई पी क्वालिटी नहीं है, दैट मींस ये शेयर में डेंजर हो गया है. ओके, सो दिस इज द बैलेंस वी नीड टू लर्न. क्वालिटी एंड हाई प्राइस को समझना पड़ेगा. जैसे बॉश है 442 है तो ऑब्वियसली इट इज टू हाई. ये 13 है, 11 है, 8 है, करेक्ट. अब हम लोग दिखाते हैं, लेट्स टेक अबव 18 के ऊपर लेते हैं जो हाई क्वालिटी है. ओके, अब हाई क्वालिटी कंपनीज है. अब बर्जर पेंट है 138 रुपए का पी है और हाई क्वालिटी कंपनीज है. राइट, अगर आप इसका हिस्टोरिकल पी विकास दिखाएगा क्या? देयर इज अ हिस्टोरिकल पी है क्या विकास? या हर्षुल के पास है. हर्षुल है यहाँ पे. हर्षुल, हिस्टोरिकल लो एंड पी हाई मिलेगा क्या? 5 साल का, 5 साल का हाई एंड लो का एक बैंड है क्या अपने पास कोई? हाँ मिल जाना. सेंडिंग दिखाई कर दे हर्षुल. ओके, तो ये बर्जर, अब एशियन पेंट 114 का पी है. रेडी कर ले, आपका रेडी हो जाएगा तो शेयर कर देना. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ 101 का पी है. पीडीलाइट 101 का पी है. नेस्ले 85 का पी है. हिंदुस्तान यूनिलीवर 80 का पी है. नाउ these are the most high quality stocks in the country. Highest quality stocks है sir, Berger, Asian, HDFC Standard Life, Pidilite, Nestle, HUL, SBI Cards, Bajaj Finance, Procter Gamble, Dabur, Divi's Lab, Pia Industries, SBI Life Insurance, Maruti. अगर आप देखेंगे सबका पी सुपर हाई. तो हम क्या करेंगे? सब शेयर को छोड़ देना चाहिए कि क्या करना चाहिए हम लोग को? तो हम लोग क्या करते हैं, हमको मालूम है क्वालिटी है. कोविड में अगर हमको मालूम है, इन केस ये सब शेयर कभी भी 20, 30, 40 पी का नीचे गिरता है तो ये सब शेयर जरूर हमें लेना चाहिए. इसका कोई चार्ट है क्या विकास? ये जो इसका कोई चार्ट है क्या बर्जर पेंट का? हाईएस्ट 5 साल का हाई लो. हाई लो है, हर्षुल दिखा देता है कि क्या है प्राइस. हर्षुल दिखा दीजिए पी रेशियो.
So while this is happening, I just had one query. Yes. It was about one of those companies that we see. It's a little puzzling to me, so I'm asking. It is in connection to ITC. Okay. So company fundamentally is phenomenal, but I see sometimes I'm seeing of late FIIs and even government sometimes, which is DII, selling. Is it because of like the sort of tagline that it comes with, wherein tobacco is still one of the main composes of 40% revenue? Is it due to that, or why would a company like that not be in the race with an HUL? Which is There are four reasons for ITC not performing. Number one, Deveshwar died and he was not well for 3 years. So he did not plan a very good successor in the company. Sandeep has come, uske baad thoda better hua hai, but that was the number one reason. Number two, any cigarette business, they are continuously increasing taxes, and that has been a big factor. Okay, also. But number two biggest reasons is the hotel business, they are having tremendous losses, and even in the FMCG business, they are struggling. They have huge competition from Hindustan Unilever and many other companies, Nestle and all other companies, FMCG companies. So they have not been able to do well in two areas where they are diversifying. The cigarette business is able to put their profits into those businesses. Cigarette company, as it is, the government is increasing taxes. So whenever there is a huge profit in ITC, that year government will definitely increase the taxes. And number four, Deveshwar was a problem. So these are the four reasons ITC is completely out of the fund manager's track record right now. Yeah. And it has not been performing. Yeah. They have been able to maintain their standard because cigarette, tax lage, people are still having cigarettes. Right. So actually, yeah, the thank you. VST, if you compare the VST, VST is doing extremely well, compared to ITC, because of they were not diversified. They were not diversified. Because VST का 5 साल का price दिखाना. The earlier days, VST tried to diversify it, and then they realized that they are losing money, so they stopped diversifying. VST, Vikash, VST का 5-year price दिखाना ना, 5-year return. हाँ. It's a fantastic return VST is given. Yeah. Five-year return is 125%. 125%, मोटा मोटी 25% का VST return दे रहा है, because they are only in the cigarette business. So what people are doing is there are a lot of people I've seen, they've shifted from ITC to VST. Okay, because they have not diversified and the other two businesses are not suffering loss. Zahid, did you get the answer? Yes, sir. Thank you. Okay. So let's continue. So we are showing this Berger Paint. Yeah, Arshul. Sure. Current से दिखाओगे तो better रहेगा. Current P is very high because of COVID. ये क्या डेट ली बेटा? What ये particular date पे लिए हो क्या? Yeah, quarter end dates. No, did we? I wanted कि वो कब गिरा था basically 23rd March को क्या P हो गया वैसे? हमको वो चाहिए. 23rd March का P. Basically high क्या बनाया? High and low चाहिए मेरे को. Date wise नहीं चाहिए. Okay. Checking. I'll just check and get back. So basically what we are trying to show you is that the P, when it becomes lower, historically जब कोई भी 30-40 पॉइंट का P घटता है, तो उस समय वो शेयर को एंटर हमें करना है कि नहीं करना है. That is the key factor. So what we are trying to say is high quality companies will always have high P. Okay? Because एक बार दिखा दो फाइल एक बार. Keep the PPT on ना, मेरे लिए थोड़ा easy हो जाता है. Yeah, sorry. Does the PP, does this trailing P changes every day, sir, with the price? Obviously, it has to. Okay.
It has to. It is P has to change with price. That is why valuation is never a fundamental parameter. Valuation never gives you quality. Valuation only gives you the price. Anything with like Berger Paint is 138p because of the any market scenario. Tomorrow there is a big war. So obviously you might get Berger Paint at 62 or 70. Now, if you're not aware that Berger Paint is a quality stock, you will never buy Berger Paint at 70p and you will again miss a big opportunity. Agreed. Correct. This is exactly the problem. So you should definitely know that is I'm showing the names of the company. Because can you see the PPT, please? Sorry, not the PPT. Excel sheet, please. Yeah. Yeah, large cap. Yeah. High quality. P. So if the market is giving an opportunity, obviously now because the market is high, it has become very high now. I'm only focusing on companies greater than 18, because I've already taught you 18 and above. So I don't want to focus. If you see 18 and above, highest quality P we have put Berger Paint. You should know, so historically this has a tendency. So I want to say 23rd March में इसका P क्या था? मतलब उसके पहले उसका high क्या था, फिर low क्या था? Because do you understand what I'm trying to say? So once you understand the quality, you should always be ready to buy Berger Paint, Asian, HDFC, Pidilite, Nestle, HUL, SBI Card, Bajaj Finance, because it has great quality. Number one, it is large cap and it has great quality. Now, if you see Reliance, huh? Vikas put Reliance here. Yeah. Reliance is a great company. Right or no? Everybody wants Reliance. No, Sir, Reliance is at a P of 33. अब Reliance के पीछे पड़ गए अभी. Reliance is at 33p. So why market is not giving a very high valuation to Reliance? Yeah. Because it has debt. That is why. अगर वो debt पूरा चुका देगा, तो Reliance will also go to 80p or 90p. The day Reliance pays off the entire debt, Reliance is an 80p story. पर आपको लगता है कि debt free हो जाएगा? What do you say? अभी तो बहुत मुश्किल है. जिस हिसाब से सितंबर में भी नहीं हुआ और उसका कितना बड़ा पैसा दे रहा है ना, the way he's competing, he's into a very high capital intensive business. Right. तो जितना पैसा है वो तो इस साल के कैपिटल में लग गया उसका. तो इतना बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, वो भी हम लोग शेयर करेंगे. अभी देखिए ये रहा, ये देखिए रिलायंस. मार्च 20 को उसका टोटल डेट था 3,36,000 करोड़ रुपया. ओके, कितना रुपया चुकाया है वो अपने उसने क्या किया, ही इंक्रीजेस हिज शेयर होल्डर वैल्यू. सिर्फ 80,000 करोड़ रुपीस कम किया है वो ओनली. ये मैनेजमेंट क्यों बोलता है कि वी आर डेट फ्री नाउ? अरे डेट फ्री क्योंकि शेयर होल्डर्स वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपया है. नेट डेट फ्री. नेट डेट बोलता है. Yeah, net debt free. We are a net debt free company. Those are things बोलने के लिए बोल दिया, कुछ सगे दे रहा. आपके सामने डेटा है सर, ये बैलेंस शीट का डेटा है. 2.5 लाख करोड़ का लोन, अनसिक्योर्ड लोन 1,70,000 करोड़ का है. शॉर्ट टर्म बोरिंग 84,000. मैंने भी सुना है सर. So he is lying. He's a liar. Not lying. ये actually net debt free. एक सेकंड. Net debt free मतलब क्या होता है कि उसका कितना शेयर होल्डर फंड है, वो क्या किया है, he has got 1,60,000 रुपया से he has increased his capital. नहीं सर, नेट डेट फ्री कंपनी में क्या होता है कि whatever borrowings are there against which जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बोलते हैं ना, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, that is subtract and that becomes a zero. That's a net debt free company. But मैंने वो देखा कि वो लोग ने क्या किया है मालूम है, रिलायंस जियो का जो इन्वेस्टमेंट है ना, they also they consider as a marketable securities. So that they have deducted and they are just showing that we are net debt free company, but these are the investment in their subsidiary companies. Right. तो ये लोग नहीं समझते हैं ना सर. अगर डेट फ्री हो जाएगा ना, रिलायंस इज एन 80p स्टोरी. रिलायंस विल बिकम 6,000 रुपीज. 6,000 रुपये जाएगा रिलायंस. अगर वो डेट ये 2.5 लाख करोड़ बेच देगा, तो जब तक वो 2.5 लाख करोड़ नहीं बेचेगा 6,000 नहीं होगा. तो आपको ये समझना होगा, रिलायंस अच्छी कंपनी है. बर्जर पेंट को 138 का भी वैल्यूएशन मिल रहा है और रिलायंस को 33 का वैल्यूएशन मिल रहा है.
बट लोग अभी भी रिलायंस खरीदेंगे, बट बर्जर पेंट नहीं खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे बर्जर पेंट का, बर्जर पेंट में कुछ नहीं है, देयर इज नो, सो दिस इज एक्चुअल में दिखा रहा हूं, अभी भी 2.5 लाख करोड़ का उसका, ही हैज 2,50,000 crore रुपीस ऑफ लोन, और इस साल का केपेक्स अभी ऐड नहीं हुआ, इस साल का केपेक्स जब ऐड होगा तो वापस से 3.5 लाख करोड़ हो जाएगा। सो आपको समझना होगा ये जो पी कौन से कंपनी का हाई, जितना, अगर विकास वो फाइल में आ जाए, एक चीज आपको समझना होगा, व्हाट इज हाई क्वालिटी, व्हाट इज 24 कैरेट शेयर्स, 18 के ऊपर लार्ज कैप, अगेन आई एम रिपीटिंग, लार्ज कैप above 18 are all 24 carat shares, सी समझिएगा, and they will always be high P, अगर आप देख लीजिए they will always be higher P, आप देख लीजिए 18 कितना शेयर है विकास, 18 के ऊपर 35 शेयर है, उसका लोएस्ट भी लगा दे, कौन सा है, लेस देन 30 को हाईलाइट कर दो, नहीं लोएस्ट ऑपरेट, हाँ ये देखिए, अब ये अगर आप देखेंगे इन्फोसिस टीसीएस को इतना हाई पी क्यों नहीं मिलता है, उसका सेक्टर पी देखिए, व्हाट इज द सेक्टर पी ऑफ आईटी, बिकॉज़ सेक्टर पी देखिए, आईटी का सेक्टर पी 30 है, तो उसको 30 मिल रहा है, राइट, और टीसीएस जो सबसे अच्छी कंपनी है 36 में, एचडीएफसी बैंक, बैंक्स का हालत बहुत खराब है, अगर आप एक मिनट नीचे विकास दिखा दे बेटा, बैंक्स का पी कितना है, 22 पी है सेक्टर का, उसको 27 मिल रहा है। हीरो इज चीप बिकॉज ऑटोमोबाइल एज अ सेक्टर इज इन अ बिग प्रॉब्लम, इसलिए पीपल आर नॉट बाइंग ऑटो सेक्टर, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ऑटोमोबाइल इज गोइंग टू रियली स्ट्रगल हु इज ऑन पेट्रोल, so they have huge capex right now for the next 10 years and the profitability cannot rise. Bajaj Auto, same story, Wipro, HCL Tech is IT companies, ITC we have already discussed the story, Aurobindo Pharma has been one company which has not performed for 5 years but last 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, and Muthoot Finance जो है वो गोल्ड रिलेटेड फाइनेंस करता है, इट्स अ कमोडिटी रिलेटेड कंपनी जिसको लोग हाई पी नहीं देना चाहते, but in all the companies if you see they are very very high P, all the high quality companies have very high P. Go up Vikash. So ये जितने कंपनीज हैं, अब जैसे बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था, इतना गोल्डन कंपनी हम लोग को 50% डिस्काउंट में मिल रहा था, जितने इन्वेस्टर हैं सब बेच दिए और फिर बढ़ गई, नया हाई बना दिया 6 महीना में। सो कोविड अप्रैल में वाज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय बजाज फाइनेंस, बट किसी ने खरीदा ही नहीं। तो बर्जर, ये सब जो समझ लीजिए कि अगर आपको पहले क्वालिटी समझना है फिर वैल्यूएशन समझना है, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड क्वालिटी यू विल नेवर बिल्ड, जो कल नीलेश शाह जी बोल रहे थे दैट व्हेन यू आर कन्विंस्ड अबाउट अ स्टॉक, then whenever the value, keep buying the stock if it keeps giving you value है कंपनी में, अगर वो घटती रहती है आप उसको शेयर खरीदते रहिए। So these are the greatest companies friend, okay, Berger Paint, Asian, HDFC Life, Pidilite. If you want to build wealth for your grandchildren, these are the stocks to invest in. So whenever these stocks are available at a 20%, 30% discount, you should put money here. So this is one strategy, you should be clear how you play large cap quality. और अगर आपको लार्ज कैप में पैसा लगाना है, अगर कमाना है, तो आपको हाई पी ही स्टॉक मिलेगा। लो पी स्ट्रेटजी ओनली वर्क्स इन स्मॉल कैप, लो पी स्ट्रेटजीज डज नॉट वर्क इन लार्ज कैप। हम लोग ने चेक किया है, उसमें रिटर्न्स नहीं है, the returns are not there because all the greatest stocks are always high P. So this is the first learning you have to understand when you are investing. High quality companies will always attract high quality price. These are the Gushis. Girish Patel ji, ये Gushi है stock market का. This is the Gushi of stock market.
आप ये सब स्टॉक्स उठा के रख दीजिए। Right. ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग ने टेस्ट किया है, आपको क्या रिटर्न मिलेगा। विकास दिखा दे फाइल से रिटर्न। या आपको पी नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है लार्ज कैप अबव 18 हमको क्या रिटर्न मिलेगा। लार्ज कैप अबव 18 विकास। अच्छा, ये नहीं दिखाना है क्या, ये पी रेशियो का? पी रेशियो लेस, पहले लार्ज कैप दिखा देना। अच्छा ओनली लार्ज कैप अबव 18 में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिटर्न है? In the predictive analytic tool. ओके ओके, पीछे से देख ले, हमको बता दे। अपने निकाले थे ना QBS अबव 18 20। हाँ 20 में निकाला है ना, लार्ज कैप मिड कैप में अपना रिटर्न था ना 84%, 74%। रेडी तो था बेटा 20 हाँ, के। 85% करेक्ट। हाँ 85 नहीं था बेटा, निकाल देना बेटा एक प्लीज। मिनट, हाँ निकाल देना। ओनली QBS। ओनली QBS, हाँ एक मिनट। उनको एक आइडिया मिल जाए ना व्हाट इज द काइंड ऑफ करेक्ट करेक्ट, बस निकाल देना। फाइल खोल रहा है एक सेकंड। हर्षुल आपके पास खुला है तो तब तक दिखा दे, मेरे पास भी फाइल खुल रहा है। पहले पी का क्लैरिटी कर लीजिए, बिकॉज़ ये पी का क्लैरिटी नहीं होने से आप लोग बहुत मिस्टेक्स करेंगे मार्केट। हाँ कर दीजिए। अबव 20 में हाईएस्ट था ना QBS का QBS above 20 is how much? 65 65% रिटर्न है 5 साल में। मोटा मोटी 13% आपको रिटर्न मिलेगा। और 18 करते तो क्या है, 18 में क्या है? चेंज क्यों हो गया, फाइल चेंज क्यों हो गया? 18 करते हैं तो अबाउट मोटा मोटी 12% का रिटर्न है। हम लोग ने टेस्ट किया है। कोई पी देखने का दरकार नहीं है। 35 स्टॉक है, रुपया लगाइए, आपको साल का 12% मिल जाएगा। And you will be able to beat the benchmark. Benchmark is 56%. So basically अगर आपको benchmark को beat करना है 35 स्टॉक, अगर 20 के ऊपर लगाएंगे तो कितना स्टॉक से लार्ज कैप? ये हम लोग की टेस्टिंग है। मोटा मोटी 13% रिटर्न मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, मोटा मोटी 20 के ऊपर स्टॉक लेना है और इन्वेस्ट करके 5 साल रखना है। You will get 13% per year. Any questions? Are you happy with 13%? No, we are not happy with. No way. लार्ज कैप में 13%, 14% की ज्यादा रिटर्न 56% है। मैं सिर्फ लार्ज कैप का बात कर रहा हूँ। Because 13% is a nominal rate. You know, if you see the nominal rate, 13% is not a good rate, yeah. It is beating the benchmark. The benchmark is 56% in 5 years. It is giving you 65% returns. And you're taking very, very little risk and you're not entering and exiting. 20 स्टॉक लगा के 5 साल भूल जा रहे हैं। 20 large cap stocks, forget for 5 years and you get 13% return every year. Friends, are you interested at 13% large cap? लार्ज कैप में आपको हम लोग रिटर्न बढ़ा सकते हैं, बट ये 5 साल का दे रहा हूं। 20 स्टॉक खरीदा, 5 साल लेके भूल गया। Better than FD, sir. And you are only invested in large caps. Your risk is very, very little, and you invested in the best stocks of the. You are buying the Gucci. You are buying the Gucci, keeping it for 5 years. No entry, exit. 5 year you just keep and you make 13%. Anybody else? Do you think it's a good strategy? किसको large cap में क्या हुआ? Large cap players here. Who are large cap players? Sure. What kind of returns do you want?
20 to 25%. 20 to 25%. Okay, I'll show you different strategy. Okay, anybody 12 else? to 15%. कितना? 12 to 15%. आपको तो दे दिया मैंने स्ट्रेटजी, राजेश देशमुख जी। हाँ सर। लार्ज कैप का 18 के ऊपर 20 के ऊपर शेयर उठा लीजिए और 5 साल छोड़ दीजिए, आपको 12 से 15% रिटर्न मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप शेयर करके 5 साल भूल जाइए। You want higher returns, then you have to change strategies. Anybody else? What kind of returns do you want? राजेश देशमुख जी, आपको समझ में आया मैं क्या सिखा रहा हूँ? हाँ सर। Mr. Venkat want 30 to 35% return. Oh, very good. सबको हाई रिटर्न्स चाहिए। ओके, हाई रिटर्न्स लेना है तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करने पड़ेंगे, मैं वही दिखाऊंगा। ओके, तो लार्ज कैप का स्ट्रेटजी 13% का स्ट्रेटजी मैंने आपको दिखाया, 12 से 13% का स्ट्रेटजी। आपको कुछ नहीं करना है बस। राकेश जी कैसा लगा स्ट्रेटजी? 20 लार्ज कैप उठाया, 12% साल का बचेगा। सर 5 साल का होल्डिंग पीरियड भी तो है। तो और क्या चाहिए आपको? नहीं तो उसके हिसाब से तो फिर 15-20% नहीं तो 15-20% के लिए अलग ही स्ट्रेटजी। आपको लॉन्ग टर्म एक ही ध्यान करिएगा, या कोई भी शेयर अगर आपको 5 साल होल्ड करना है आप सिर्फ लार्ज कैप ही होल्ड कर सकते हैं। हाँ, दैट इज ट्रू। ठीक है, ये मैं सिखा रहा हूं। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी होल्ड करना है 5 साल 3 साल, आप सिर्फ लार्ज कैप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो छूनी नहीं। अगर आपको रिटर्न बढ़ाना है, नाउ यू हैव टू रीबैलेंस एवरी 1 ईयर टू इंक्रीज योर रिटर्न। नहीं तो अपना रिटर्न कभी बढ़ा पाएंगे नहीं, क्योंकि क्या है, लोग समझते हैं कि अगर आपको रीबैलेंस करना होगा एवरी 1 ईयर, और आपको और रिटर्न बढ़ाना है तो आपको रीबैलेंस करना होगा एवरी 3 मंथ्स। So can you do rebalancing every 3 months, or you can do rebalancing every 1 year, or you want shares for 5 years? Let me check. Let me ask everyone. Can you please write on the chat what you want, because everybody has different thought process. What do you want, friends? You want shares for 5 years? Mr. Wong, rebalancing every 3 months, okay? Rebalancing every 3 months is okay, sir. Rebalancing every 3 months is okay. Okay, very good. राजेश देशमुख 5 years, तो बस आपको तो स्ट्रेटजी मिल गया राजेश देशमुख जी, हो गया काम आपको। We want return, we can rebalance 3 months or 1 year, Mr. Mohan Shri? 3 months or 1 year? 3 months, okay, very good. Three months. 5 साल होल्डिंग पीरियड करना है, एंट्री एग्जिट नहीं करना है, मैंने आपको स्ट्रेटजी दे दी है। ओके, हरेश जी वांट्स रीबैलेंसिंग एवरी 1 ईयर। ओके, you want to do rebalancing every 6 months, rebalance every 6 months. Okay, very good. Okay, now I will show you a strategy in large cap. I will show you a strategy in 1 large minute. cap. Sir, what do you actually suggest? 3 months or 6 months? मेरा नहीं, तो आपके ऊपर है ना। जैसे राजेश देशमुख जी वेरी हैप्पी, ये तो आपके ऊपर मैं आपको सब स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। मेरे कुछ पैसे लगे हुए 5 साल में, मेरे कुछ पैसे 1 साल में भी लगे हुए, मेरे कुछ पैसे 3 महीना में भी लगे हुए। मैं तीनों में अलग अलग पैसा लगा रखा हूँ। No, but then where do you get the best returns? Returns are always 3 months rebalancing. तो मैं आपको दिखाऊंगा ना। Okay. अब लार्ज कैप 3 मंथ तो मेरे स्ट्रेटजी में है। विकास, शो द स्ट्रेटजी ऑन द ऐप। नहीं, रीबैलेंसिंग एवरी 1 month नॉट पॉसिबल। You can, yeah, you can do it. You can rebalance every 1 month is derivative, Mr. Venkat. But the returns are not so high. अच्छा रिटर्न्स आप ले सकते हैं। हम लोग ने लार्ज कैप का रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी बनाया है। आप लोग शायद many people must have bought this strategy already. Yes, sir. Who has this large cap strategy rebalancing? तो रिटर्न कैसे जनरेट होती है वो आपको समझना होगा कि शेयर का रिटर्न बढ़ता कैसे है।
इसका रिटर्न है 36% साल का, चाहिए क्या 36% रिटर्न? हाउ मेनी पीपल हैव दिस स्ट्रेटजी, लार्ज कैप स्ट्रेटजी? मेरा कोई बात ही नहीं करता है। हाउ मेनी पीपल हैव दिस स्ट्रेटजी? I have. Sir, before this call, when we had to select, I could not select because, honestly speaking, I did not have much of an idea about the different types. हाँ, मैं आपको भी, आपके लिए मैं सिखा दूंगा आपको, मैं, बट बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जाहिर जी, मैं आपको भी सिखा दूंगा। How many people have this strategy, large cap 3 months? मेरे पास I है। have, sir. I have. I have, sir. So basic, राजेश जी आपके पास भी ये स्ट्रेटजी है? हाँ हाँ। तो ये जैसे ये स्ट्रेटजी बोला वैसे ही करते हैं आप? नहीं, अभी तो लिया है ना, अभी वो पहले जो स्टॉक थे ना, अभी फरवरी में आएंगे ना नए, तो देखेंगे। तो फरवरी में आएंगे, तो अभी जो स्टॉक लिए वो उसमें इन्वेस्ट नहीं किए? नहीं किया नहीं अभी, वो उसमें से 3 तो है मेरे पास। ओके, नाउ क्वालिटी के बाद एक चीज समझना पड़ेगा कि रिटर्न बढ़ती कैसे है, स्टॉक का रिटर्न, स्टॉक की भाव बढ़ती कैसे है? How does the stock return increase? So there are two very important parameters. One is definitely the momentum strategy. अगर आपको रिटर्न चाहिए तो you have to use momentum. अगर आप 3 महीना का मोमेंटम यूज नहीं करेंगे तो आपको कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। Okay, so whenever you decide to increase your returns, you have to use momentum. What is a momentum? Momentum is 3 month positive, उससे रिटर्न बनती है। Okay, and obviously 10% growth. So these are two very important criteria which is very important for returns in a strategy. अगर आप ये 3 month हटा देंगे, because इसको 3 month को 30% कर दें, रिटर्न देख रहे क्या हो गया, 61% हो गया। If you never see the 3 month return, last 3 month return, you will never make returns in the stock market. Yeah. Are you able to understand what we are teaching you? हरेश जी आपको समझ में आया क्या रिटर्न कैसे बढ़ती है स्ट्रेटजीज में? Sure. Yeah. So if you don't see the last 3 months performance of a stock and you buy, उससे आपकी रिटर्न्स कम हो जाएगी। So क्वालिटी तो हम लोग देख ही रहे हैं, सेल्स ग्रोथ वो सब तो स्टडी कर लिए, पर उसमें लास्ट 3 मंथ देखेंगे तो रिटर्न बढ़ जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, तो आपका समझो कि 3 month strategy, so are you changing the entire stock or it is like a more or less you know 50 to 70% स्टॉक चेंज होता है। अच्छा 50% स्टॉक चेंज होता है, ओके। 50 to 70% स्टॉक चेंज हो जाता है। इट्स अ 3 मंथ रीबैलेंसिंग ना। राइट। आपको 5 ईयर रखना है, स्टॉक चेंज नहीं होगा, सेम स्टॉक्स 5 ईयर, पर उसका रिटर्न 13% ही आएगा। बराबर है। बट अगर आपको रिटर्न बढ़ाना है, रीबैलेंस आपको 3 महीना में करना होगा। यही तो चीज लोगों को समझ नहीं आता है। They don't understand the concept. If you want to increase the return, then you have to play 3 months or 1 year. Then you will get returns. So based upon the quarterly result, I think so you can take a call, right? हम लोग क्वार्टरली के बाद ही देते हैं। बराबर। क्वार्टरली के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं इसमें सेल्स ग्रोथ आया है, लास्ट 3 महीने में पॉजिटिव है, उसके बेसिस पे हम लोग स्टॉक डिसाइड करते हैं और उससे रिटर्न बढ़ाते हैं। राइट। आपको ये पहले जानना होगा कि बाजार में रिटर्न बढ़ता कैसे है। बाजार में रिटर्न जब ही बढ़ता है जब उसमें उसका हम लोग देखते हैं कि वो शेयर लास्ट 3, 4, 6 महीना में शेयर का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। ओके, बट अगर आपको रिटर्न नहीं देखना है तो देन यू विल गेट 12-15%, वो भी पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कि मार्केट समटाइम्स डिस्काउंट इट बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट, ऐसा होता है क्या? हम लोग तो सबके बाद लेते हैं, उसके बाद का रिटर्न दिखा रहे हैं हम लोग 170%। या हम लोग का तो टेस्ट किया हुआ है, तो वी आर शोइंग यू आफ्टर द रिजल्ट्स ओनली। ओके। और वो 1-2 महीना में कोई मार्केट डिस्काउंट नहीं करता है। मार्केट में अगर आप क्वालिटी स्टॉक लेते हैं, उसका 3 महीना का रिटर्न अच्छा है, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है।
पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि शेयर की भाव बढ़ती कैसे है, राइट? सो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पी? अगर आपको हाई पी से डरना नहीं है, ओके, हाई पी लार्ज कैप में आप ले भी लोगे, 5 साल होल्ड करोगे तो आपको 13% रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपको रिटर्न बढ़ाना है तो हर 3 महीना में डिसाइड करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ऐड मोमेंटम टू क्वालिटी। इफ यू ऐड मोमेंटम टू क्वालिटी द रिटर्न्स आर गुड। बिकॉज क्यूबीएस में अगर 3 महीना निकालते हैं क्या रिटर्न आता है अपने देखोगे क्या पीछे से? हर्षुल, हाँ हर्षुल 3 महीना का रिटर्न लगा के क्यूबीएस में देखोगे क्या लार्ज कैप में? हाँ हाँ तो लोगों को ये नहीं मालूम कि शेयर की रिटर्न बढ़ती कैसे है। दिस इज वेयर वी आर एक्सपर्ट इन। 93%। ओके, दिखा दो एक बार। अब देखिए मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ 3 मंथ रीबैलेंसिंग का। क्यूबीएस 18 कर दे। क्यूबीएस 18 रखा है क्या? 20 रखा है? बिकॉज क्यूबीएस क्या रखे हैं? क्यूबीएस 20। ओके, क्यूबीएस को वो कर दे, क्यूबीएस को 18 कर दें। 65 क्यों हो गया? 3 मंथ रिटर्न हटा दिए क्या? 3 मंथ रिटर्न हटा दिया। रखो ना बेटा, 3 मंथ रिटर्न बोलता है। हाँ 63। अब इसको 20 कर दे। So these are all models जिससे हम लोग रिटर्न चेक करते हैं। ये सब मॉडल्स बनाए हुए हम लोग की। सो बेसिकली अगर आप 20 क्यूबीएस ले लेते हैं और लास्ट 3 महीना देखते हैं तो आपको 93% रिटर्न मिल जाएगा। और उससे भी बेटर स्ट्रेटजी मैंने अपने ऐप में डाला हुआ है, अबाउट 176% रिटर्न का स्टॉक्स का। तो पहले लोगों को ये नहीं मालूम है कि रिटर्न बढ़ती कैसे है स्टॉक में। स्टॉक का दाम देखिए, एंड ऑफ द डे वी हैव टू चेक that the stock has to give us return, yes or no? But Yes. लोगों को ये नहीं मालूम कि कौन सा पैरामीटर से रिटर्न बढ़ता है। ओके, इसमें एजीएस लगाते तो क्या होगा? कौन सा एजीएस लगाने से बेटर है? 3 मंथ रहने दे कि हटा दें? 3 मंथ हटा दें। You check 3 quarter. Three quarter gives 66%, gives 77% return. Basically last 3 months is better. Yeah. Basically last 3 months हम लोग क्या इसी तरीके से स्ट्रेटजीज को बनाते हैं कि कौन सा किस तरीके से उसकी हाई रिटर्न आ सकती है, और वही स्ट्रेटजीज हम लोग ऐप में डालते हैं। Mr. Venkat, are you understanding how are we able to select stocks which will give returns? 20 quarter AGS 70% and QBS 18 will give you 98%. 18 QBS and 18 QBS and 70% 20 quarter AGS. स्टॉक नहीं है ना, 5 ही स्टॉक। हाँ। So people don't know that how the stock prices gives return. This is मैं आपको बता रहा हूँ कि without momentum understanding you cannot increase the return. This is a very important truth जो शायद मैं आपको clear कर रहा हूँ। Quality is very important so that you don't lose money in the stock market. But momentum, last 3 महीना का return, 6 महीना का return, AGS is very important to increase the return of the stock. You have to learn that. Okay, so I'll teach you another concept called AGS. Return किससे बढ़ती है ये लोगों को एकदम नॉलेज नहीं है कि स्टॉक का भाव बढ़ता कैसे। Okay, anybody can tell me स्टॉक का भाव फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस बढ़ती कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया, do you know how future stock prices increase? Only with the momentum. Until unless that is why you have to use the momentum to get the higher return. अगर आप नहीं करेंगे आपको कभी भी high return नहीं मिलेगा। अब मैं आपको concept समझाता हूँ AGS का। So high PE you can still invest with high PE in a long term horizon. In large cap you have to use high PE to make money, 13% 5 years. Simple strategy.
5-year holding period, huh? Just a सर ये डिविडेंड भी मिलता है, अरे डिविडेंड भी मिलता है. डिविडेंड तो मिलेगा ही, वो तो हम लोग इसको इंक्लूड भी नहीं किए. So you mean to say if your horizon investment horizon is longer the period, forget about the PE, concentrate on the quality. Definitely you will get that. Always concentrate on quality, and you only hold large cap for 5 years. 5 years, yeah. In case अगर if you आपको wanted, कभी भी लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, आप सिर्फ लार्ज कैप ही होल्ड कर सकते हैं. correct. Where you Only- don't have to see anything. Got it. So only thing when it comes to a short-term holding, then the PE also matters. The high PE also matters. You must No, treat in with the short term, momentum matters. Again, it momentum does not matter. Okay. अभी I'm teaching you strategies for large cap actually. कि large cap में अगर आपको खेलना है, तो how will you pay? So it depends on what is your holding. Till you don't you tell me a holding period, I cannot teach you what returns you can get. Correct. So I'm showing you strategies. अच्छा मेरे को 5 साल होल्ड करना है. जैसे राजेश जी को 5 साल होल्ड करना है, लार्ज कैप का 15-20 स्टॉक लेके भूल जाओ और मार्केट से निकल जाओ, तो आपको मोटा मोटी 12-13% का रिटर्न मिल जाए. yes, Alpha Genter School. Sorry. Alpha Genter School. So now please understand, अगर आपको कभी भी वो देखना है कि कौन सा स्टॉक, which stocks will give high returns, तो एक मोमेंटम यूज करना है. मोमेंटम मतलब लास्ट 3 महीना में 6 महीना में स्टॉक का क्या प्राइस मूवमेंट है कि नहीं, राइट. क्वालिटी के बाद, हाँ, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिटी के बाद. If you focus on the quality and then you use momentum, that's a very very good strategy. You don't use momentum and you, एक और सब लोग क्या गलती करते हैं, they do technical analysis but they don't see the quality. तो जब मार्केट गिरता है वो पूरा लॉस हो जाता है. गिरीश भाई बोलते हैं कि I am surprised that he has not. गिरीश भाई, have you not suffered losses? गिरीश भाई, in your golden triangle? No, not much. All the time I am holding the shares for a longer period. This actual shares I am holding since last 40 years. नहीं, वो 40 years वाला भूल गए सर. जो स्टॉक आपने लास्ट 2-3 साल में खरीदा उसको बताइए सर. I have purchased Reliance at the 1,060 rupees in 2016. Thereafter the bonus was declared and Jio plan was declared. So I bought it. It was just coming out from the 10 years triangle period, and it has made more than double the money. Okay. In 3 years. अच्छा स्टोरी मत बता. You don't have any bad stories? In some small caps, I lose the money. So everybody has. Which normally I do not do, but sometimes because of I have. So everybody, I also have some bad stories. When people only talk about good stories, right? So I have. There is nobody in the world who does not have a bad story. Even Warren Buffett has a bad story. So the question is, कितना छोटा है, कितना मोटा है important. Sometimes I have made mistake in buying the G-Tele at 3,000 rupees. Then I started making losses. What I'm trying to teach you is, अगर आप golden triangle को use करेंगे for quality stocks, you will make more money. Right, sir. Don't try to use golden triangle for small cap stocks. मैं ये बोल रहा हूँ. It can be very dangerous. Right, sir. If you use that technical analysis with quality stocks, आपको ज़्यादा पैसा बचेगा. Right, sir. This is what I want to teach you. Okay. So what is alpha generator score? Alpha generator score is that which are the stocks which is continuously beating the benchmark. You guys का एक example था ना? Do you have an example था ना एक तो? हाँ ये रहा. थोड़ा बड़ा करेगा क्या? ये बड़ा तो नहीं. अच्छा दिख नहीं पहुंच. ठीक है. Friends, अगर आप देखेंगे, this is Reliance quarterly result.
ओके, रिलायंस 8% बढ़ा लेकिन मार्केट 14% बढ़ा, राइट। रिलायंस बाजार कहाँ गिरा देखिए, यहाँ पर मार्केट 7% गिरा लेकिन 5% वो गिरा, तो उसको पॉजिटिव मिला। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड, whenever the market falls, Reliance will fall less, so it will get positive. Whenever the market rises, Reliance will rise more than the market, it will get positive. So if you see, Reliance has a score of, out of 20 quarters, Reliance has beaten Nifty 13 times. Okay, so Reliance has a tendency to always give very, very high positive return. This is known as alpha generator score. Any questions on alpha generator score? No. Sir, what is the period considered for this? Alpha generator score for all the stocks? Yes, all the stocks ka alpha generator score is available. हाँ राकेश, what is the period taken for alpha generator score? Every quarter. Every quarter. Yeah. Okay. Okay. So basically we take result date to result date. 15 November देखिए ऊपर दिया हुआ है, 15 February to 16 November to 16 February, 16 February to 16th May, देखिए दिया हुआ है ऊपर, अगर आप देखेंगे। सर इसका QBS ज्यादा नहीं है ना रिलायंस का, तो वो आपके स्ट्रेटेजी में आएगा ही नहीं। आएगा, स्ट्रेटेजी करेक्ट, बराबर ना, करेक्ट। बट वो अगर बिकॉज उसका AGS अच्छा है तो हो सकता है मेरे स्ट्रेटेजी में आ जाए। उसका AGS अच्छा है। अच्छा अच्छा, बट बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है मेरा सर। तो पहले हमें QBS देखना है, फिर AGS देखना है। AGS आप देखोगे तो QBS नहीं देखते क्या? जब AGS देखते हो QBS हरदम देखते हैं, हम बोलते हैं 99% 95% नहीं आएगा, बट मेरे कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जहां पर ये हो सकता है वो आ जाए, कोई 100% 95% नहीं आएगा। राजीव, क्लियर हुआ? राजीव नहीं आएगा। सर आपने जब AGS वर्कआउट किया तो उसमें QBS इज ऑलरेडी इंक्लूडेड? नो 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 नो, कोई लिंक नहीं है दोनों सर, कोई लिंक नहीं है दोनों। ठीक है, these are two separate scores, no link with each other. That means for me QBS is first and then comes AGS. Obviously इसलिए तो 2 दिन QBS पहले स्टैंड किए। Yeah. लेकिन अब जैसे ITC का दिखाता है, विकास जोश ITC। शैलेश जी आप कंबाइन स्कोर निकालो दोनों का। नो नो नो, हम लोग काम किए, फेल हो गए, इसलिए बंद कर दिए। टेस्ट कर लिया हम लोग ने, फेल हो गए, बंद कर दिए। Don't do that. No way it can be also, sir. Yeah, that is quality and this is price. This cannot be. Two different things. अगर आप कंबाइन करोगे प्रॉब्लम आएगा। इतना जीत नहीं, हम लोग सब टेस्ट करके करते हैं। You are right. Absolutely, it will confuse. Quality is quality, return is return. Return. Never mix both. नहीं, लेकिन आप समझो कि आपका क्वालिटी स्टॉक में से फिल्टर करके AGS कंबाइन करके स्कोर निकल सकता है क्या, ऐसा कुछ? हाँ है ना, हम लोग, आप निकाल लीजिए, है ना स्टॉक स्क्रीनर। ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए ITC का स्कोर है 19, QBS तो बहुत हाई स्कोर है इसका। बेटा यहाँ चेंज करने ना बेटा, डालेगा क्या बोला? हाँ डालेंगे सर, डालेंगे, वो बात हो गया, आज डाल देंगे। एक दो बेटा नीचे डाल देंगे, वो भी डाल देंगे। 20 क्वार्टर दिखाते बेटा। 20 क्वार्टर का स्कोर है 7। तो बेसिकली it is not able to beat. So कितना स्कोर, how you rate which one is a good score like? तो हम लोग ने देखा है the score which is 70%, 14, 13 and 14 are very very good scores in AGS. 13 and 14 are very good scores in AGS. Sir, but if you put that kind of filter, we will get very less stocks. So you must have somewhere optimum, right? तो हम लोग देखा है, हम लोग ने देखा है, आपको मिलता है, अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। जरूर अपने को 10 ही स्टॉक चाहिए तो 10 स्टॉक्स मिल जाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर स्टॉक में जाएंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि AGS
सी हम लोग को एंड ऑफ द डे सब मेरे से पूछते हैं कि सर रिटर्न कैसे बने। मैं आपको रिटर्न कैसे बनता है वो सिखा रहा हूँ। रिटर्न बनता है मोमेंटम से। लास्ट 3 मंथ 6 मंथ का प्राइस देखने का कोशिश करिए, लास्ट 9 मंथ्स लास्ट 1 ईयर में वो शेयर ने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। सो दैट हेल्प्स यू फॉर रिटर्न, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट हेल्प्स यू इन रिटर्न इज एजीएस। अगर वो कंपनी निफ्टी को बीट कर पा रहा है या जब बाजार गिर रही है और कम गिर रहा है, so those are also very good companies which gives high returns. Are you able to communicate? Yes sir. So returns अगर चाहिए तो आपको कैसे, ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज लोग मेरे पास आते हैं सर आपने क्वालिटी बता दिया बट आईटीसी में तो रिटर्न नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ जाहिर आल्सो। जाहिर, am I correct? That was your question. Yes. So you have to use the concept of momentum and AGS for higher returns in stocks. Okay, there are other parameters also which we will teach. विकास, और कौन से पैरामीटर में 100% के ऊपर आ रहा है जो तुम फाइल बनाया है? तुम्हारा फाइल में 100% के ऊपर वाला दिखा रहा है। हाँ, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि रिटर्न किससे बनती है, फ्यूचर रिटर्न्स। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको फ्यूचर रिटर्न से मतलब होना चाहिए। आर वी कम्युनिकेटिंग? आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, इसलिए पीपल आर क्वाइट, बिकॉज आप कभी ये कॉन्सेप्ट समझे नहीं होंगे। इट्स अ कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर रिटर्न्स। सर वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर, लास्ट 20 क्वार्टर का हमने एजीएस देखा, उसमें देखा वी गॉट 14% पॉजिटिव एजीएस। हाँ। तो उसके बाद हम 2-3 क्वार्टर के बाद वो अगर कम हो गया तो उसको चेंज करेंगे फिर हम। आपको, आप क्या करना चाहते हैं? आपको आप 5 साल के लिए कितना, आप ये पहले बताइए, यही क्लियर है। 5 ईयर आप रीबैलेंसिंग है, 1 ईयर है, 3 मंथ है? 3 मंथ। 3 मंथ में क्या हर 3 महीना में देख के चेंज कर लीजिए, प्रॉब्लम क्या है? ओके। ये तो आपका, आपने पहले डिसाइड किया ना, इसीलिए मैं तो 5 साल से चालू किया हूँ। आपको 5 साल का स्ट्रेटेजी चाहिए तो मैं आपको दे दिया, पर वो 5 साल में 13-14% से ज्यादा स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी नहीं। नंबर 1 पॉइंट, इफ यू डोंट वांट टू टच बाय एंड सेल, मैं 5 साल दे रहा हूँ, नो बाय एंड सेलिंग, बाय एंड 5 ईयर बाद देखेंगे हम, ये आपको स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। तो चेंज कब करना चाहिए? 14 इज फॉर एंट्री एंड चेंज फॉर चेंजिंग 10। मैं तो आपको दे ही रहा हूँ ना स्टॉक्स, हर मेरे तो आपने स्टॉक्स लिए ही है। हाँ जी। तो आपको मैंने हर 3 महीना में दे रहा है, आपको स्टॉक चेंज करते रहिए। ओके। मैं तो देता ही हूँ, बट आपको खुद को करना है तो वो भी मैं सिखा रहा हूँ। हाँ जी। yeah, QBS plus one buy more by factor. sales. Yeah, QBS plus AGS in small cap has given 117% return, 65% AGS, and QBS was 17 and above. Okay. Then in mid cap we got 125%. This was good. 3/4 AGS was working everywhere. If we use for mid cap 100% 3/4 AGS and 16 QBS 125%. Balance in Mandi and good in Teji also. बेसिकली बोलने का मतलब है, आपको अगर रिटर्न चाहिए तो सिर्फ QBS यूज करेंगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। उसके साथ AGS ऐड कर देंगे तो 16-17 का QBS अगर आप देखेंगे सब जगह काम कर रहा है। 16-17 का QBS एंड मोटा मोटी AGS यूज करेंगे तो यू विल गेट 10-15 स्टॉक्स व्हिच विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। Yeah. How to use the app so that you can generate good returns, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। Yeah. Then if we use sales growth, YOY sales growth 10%. This is also working in large cap and mid cap, not better in small cap and multi cap. If we use YOY sales growth greater than 10% and QBS greater 20 and greater, we will get 107%. तो बेसिकली व्हाट इज द अदर फैक्टर जिससे रिटर्न मिलता है? पहले मैं आपको रिटर्न बता रहा हूँ। हरीश भाई आप समझ रहे हैं, मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट दे रहा हूँ जो अभी मैं बता रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हैं रिटर्न कैसे बढ़ती है मार्केट में? Yes, sir.
रिटर्न कैसे बढ़ती है उसका कोई रीजन होता है, आइदर आप एजीएस यूज करो या आप मोमेंटम यूज करो या फिर सेल्स ग्रोथ यूज करो. So if you use sales growth 10 to 15% with QBS, उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. And what we found is कि market was down by 44% in falling market, but it fell only 20%, so half in mid cap. So very good return this. Second, we got this mid cap में 20 in EPS growth, 15% EPS growth and 20 QBS, 120% return. And in small cap, 15% EPS growth and 20% QBS gave 93% return. आपको हम ये देखते हैं आप कैसे यूज करेंगे. ऐप में दिखा दो तो इनको समझ में आए हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स जो आपको अच्छा रिटर्न देगा. अब मैं आपको दिखाता हूँ. ऐप में जाइए, मोड QBS. आपको मालूम है सेल्स 10 to 15%. तो हम लोग ने सब कुछ बना के दे दिया है, बट प्रोग्राम में बता देते हैं हाउ टू नो विच स्टॉक विल गिव गुड रिटर्न्स. यस. अब देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान फूड है जिसका सेल्स बहुत हाई है, बट QBS बहुत कम है. तो नीचे आते रहो. QBS कितना लेना था बेटा अपने को? पहले लार्ज कैप कर देना, एक एक सिलेक्ट कर लेते हैं. लार्ज कैप करके कर ले, ऊपर में सिलेक्ट लार्ज कैप. लार्ज कैप का दिखा दे, वहां पर क्या था पहले स्ट्रेटेजी में दिखा दे. व्हाट इज द आंसर? या QBS with and sales. QBS and sales in large cap was 15% and 20 QBS. Okay, 15%. ठीक है, गुड. जाइए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ रिटर्न कैसे बनती है. सब मॉडल्स बनाया हुआ है टेस्ट करके. 20-22% का रिटर्न चाहिए एंड दीज आर ऑल क्वार्टरली रीबैलेंसिंग. आपको हर 3 महीना में क्वार्टरली रीबैलेंस करना होगा. आप देखिए 15% के ऊपर ले लिए. सो 3 ही कंपनी है, डीवीज लैब, बंधन बैंक, मुथूट फाइनेंस. और इसमें लेना चाहिए 20, 13, 19. 20 के ऊपर था ना. या So, एक ही कंपनी आएगा कि मुथूट फाइनेंस ले लेना चाहिए. मुथूट फाइनेंस लेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. नहीं, नीचे आओ. मुथूट फाइनेंस और भी तो है, नीचे आओ. 15 ये वाला. प्रॉक्टर गैम्बल ले सकते हैं 15%. लार्सन टुब्रो इन्फोटेक ले सकते हैं. 3 कंपनी ले सकते हैं, मुथूट, प्रॉक्टर गैम्बल ये और HUL भी ले सकते हैं. बस 4 कंपनी लेंगे तो आपको मोटा मोटी 20-22% का रिटर्न आ जाएगा. सो शेयर का दाम कैसे बढ़ता है पहले समझना पड़ेगा. शेयर का दाम बढ़ता है आइदर मोमेंटम से, या शेयर का दाम बढ़ता है आइदर फ्रॉम सेल्स ग्रोथ से, या शेयर का दाम बढ़ता है EPS ग्रोथ से. 10-15% ग्रोथ आपको लेना ही पड़ेगा क्वार्टरली विद QBS. या शेयर का दाम बढ़ता है वो जब AGS से. अगर आप ये सब फैक्टर यूज करेंगे so you will get very good returns. End of the day we are focused on returns and that is the key factor. ये हम लोग ने टेस्ट किया है कि what gives us returns in future. तो this is giving me returns in future. So ऐसे ही हम लोग ने सब स्ट्रेटजीज बनाया है टेस्ट करके कि ये सोचने, इस तरीके से सोचने से रिटर्न हमारी बढ़ती है. तो मैं सेल्स ग्रोथ 10-15%, मेरा अगर आप जितना भी स्ट्रेटजीज देखेंगे सब में आपको सेल्स ग्रोथ और EPS ग्रोथ आपको 10-15% मिलेगा. सो दैट इज व्हाई क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई भी कंपनी में 10 से 15% का सेल्स ग्रोथ या EPS ग्रोथ आता है, और अगर उसका अच्छा QBS है तो आप समझ लीजिए उसका दाम बढ़ने का चांस बहुत अच्छा है. I cannot make it as simple as this to make you make money in the stock market. Any feedback, sir? Venkat ji, कुछ समझ में आया? Venkat ji, if you can share feedback. Did you understand what we are trying to teach you? How to generate returns? Mr. Venkat. Yes, sir. Yes. Can you please repeat? Can you please repeat? Can you please repeat what we are sharing? So we are sharing that which stocks are about to perform. So which stock? No, you tell me that how does the future prices increase? What should be in the strategy so that you know that the future prices will increase? What makes the future price increase? मैं ये पूछ रहा हूँ. Sales growth. Okay, sales growth. How much percentage? Should be more than 10%. 10 to 15%. 10 to 15%. Okay, and AGS
Okay. Good AGS score and the EPS growth more than 10%. And also momentum, last 3 month momentum. Yeah. हाँ राकेश जी कुछ पूछ रहे थे. But in the AGS, you're taking this momentum part, no? AGS is momentum, so I can use 3 month or AGS, any one of them. So we conclude by saying that QBS plus AGS plus sale growth plus EPS. No, plus मत करे फिर short stock नहीं बचेगा. Only two. Only two. So AGS or sales or EPS. Yes, that's it. So that all we can derive from the app. Yeah, अभी तो दिखाया ना आपसे. सामने तो है. Yeah. Sir, from this mode screener, what I could see is basically the sales, QBS and sales I can see, QBS and EPS I can see, right? Straight away. QBS and EPS and वही तो देखना और क्या देखना है? QBS and AGS also can I see in the, can we include the AGS? देखे ना AGS है ना यहाँ पर. ये रहा AGS देखे? Okay, done. All given sir, आपके सामने है. So, but here the AGS is basically the 20 quarter AGS. Yeah. Yes, we will add. But how would? वो भी add हो जाएगा. Yeah, we 3 quarter also will be added. Okay. Yeah, 3 quarter will take some time, but we'll add it everywhere. Okay, super. That is a one-stop place, sir. That we did not go for multiple filters. Straight away go here and. That is the purpose. Now I want to make your life easy. I don't want you to make it confusing. You know, I want you to within 2 minutes you should be able to select a stock. Yes. It's a great stock, and I'll make return. That is the key factor. Yep. So what is the best, combination that you have found is whether with QBS it is AGS or it is sales growth or it is the EPS? मोटा-मोटी सब में 100-125% आता है. 100. Either of the QBS with either of the three. अभी दिखाया ना सब में 100-125% सब में है. Haresh ji, are you understanding what we are sharing right now? Haresh ji? Yes, sir. Got it. तो रिटर्न कैसे फ्यूचर की बढ़ती है उसमें कुछ मेथोडोलॉजी होना चाहिए सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईपीएस एंड सेल्स ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रिटर्न्स ऑफ द शेयर. अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगा. सर इस कॉम्बिनेशन में से बेस्ट कौन सा है जिसमें रिस्क भी कम हो जाएगा? फिर सब में रिस्क मोटा मोटी काफी कम ही है, सब में रिस्क कम है. No, like in AGS, it maybe I feel is slightly more than. QBS तो कल सिखा दिया ना, सब में QBS से तो रिस्क कम ही है ना सब में. QBS तो ले लिया मैंने. तो QBS से रिस्क कम हो गई. Fine, but in AGS से रिस्क कम हो गई और AGS से रिटर्न बढ़ी. But AGS will increase the risk also slightly. No, sir, no. Your QBS is you are investing. AGS only AGS is very risky. राकेश जी. आप फिर गलती कर रहे हैं. मैं आपको क्या सिखाया? QBS with AGS सिखाया. मैं only AGS सिखाया क्या? नहीं, that is fine. But I mean, what I'm trying to ask you is, मैं ये clear कर रहा हूँ. QBS is first. Then whether it is AGS or sales, yes, which reduces the. Yes. That is what I wanted. Yes. Clear? So QBS is a risk minimizing tool. राकेश जी, ठीक है ना? वो तो आपको 2 दिन सिखा दिया ना रिस्क मिनिमाइजिंग टूल. Yeah, that's true. अब आप क्या कर रहे हो? मेरे को रिस्क तो लेना नहीं है. कब रिस्क लेना है? अब मुझे रिटर्न बढ़ानी है. ठीक है. तो मैं रिटर्न कैसे बढ़ाऊं? तो रिटर्न बढ़ाने के लिए आपको कोई चीज यूज करना पड़ेगा रिटर्न बढ़ाने के लिए. This is called high return, low risk strategies. If you only use AGS, राकेश जी, जब बाजार तेज होगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जब बाजार गिरेगा तो वो बहुत जोर गिरेगा भी. क्यों? क्योंकि इसमें क्वालिटी नहीं है. क्लियर? नॉट क्लियर? यस. तो पहले आप QBS से आपको मालूम है बाजार गिरेगा, मेरा शेयर कम गिरेगा, तो यू आर सेफ. नाउ यू आर फोकसिंग ऑन रिटर्न. ट्रू. अगर आपको सिर्फ रिटर्न चाहिए 150%, 200%, तो आप सिर्फ AGS ले लीजिए. Risk will be slightly higher. Slightly नहीं, very high. Very high राकेश जी. नहीं QBS 40% साफ हो जाएगा. नहीं सर, QBS में मतलब हम इतना ही उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे. QBS मतलब हम मॉडरेट साइज में ले लेते हैं, अगर गुड में ले लेते हैं, हाई में नहीं लेते हैं, एक्सेलेंट में तो रिस्क बहुत ज्यादा है.
No, good मैं आपको size. सिखा रहा हूँ, यही मैं सिखा रहा हूँ। No, what my question is, if we don't take the 18 to 22, if we take फिर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अच्छा, okay. फिर सब कुछ टेस्ट कर चुके हैं, आप करिए, फिर रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐप का फायदा ही क्या हुआ सर? मेरा ऐप मैंने दे दिया तो मैं आपको टूल सिखाओ तो सही कि किसमें रिटर्न मिल रहा है, किसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप करिए ना जो आपको करना है। मेरा गलती नहीं है, फिर मैंने सर आप मेरे पास आए, मैंने आपको सिखा दिया, टेस्ट करिए, आपको जो करना है करिए। अभी आपने जैसे कहा लार्ज कैप, अब मैं अगर मेरे पास गुड QBS स्कोर जो आता है वो मिड कैप में आ रहा है, मैं उसमें फिर अगर AGS को कंबाइन कर रहा हूँ तो you think the same kind of return should be expected? What is the, आप बताइए ना विकास, फ्राइंग खोल क्या बोल रहे हैं? मिड कैप लेता हूँ, लार्ज कैप में ले लेता हूँ। मिड कैप बोलते हैं ना, मेरा फाइल बना हुआ है विशाल, मिड कैप, ये रहा मिड कैप। मिड कैप में आप AGS लीजिए, AGS एंड QBS वाला स्ट्रेटजी बता विकास। AGS एंड QBS, AGS एंड QBS 20 क्वार्टर में मिड कैप में 89% है और 3 क्वार्टर में 125% है मिड कैप। 3 क्वार्टर में 125% है। 16 का QBS लीजिए और 3 क्वार्टर करिए, हाँ 125% का रिटर्न है राकेश जी। यस, फैंटास्टिक सर, वेरी बैलेंसिंग, वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी। और आपको क्या चाहिए सर? वो कौन सा में पैसा आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। So on the app you have certain different types of strategies also mentioned with certain people's names on it, like Warren Buffett or Rakesh Jhunjhunwala. Right. What are the differences in these अभी दिखाते हैं, strategies? वॉरेन बुफे का स्ट्रेटजी दिखाओ। So Warren Buffett is a 1-year rebalancing strategy. We use these 4 parameters. So what is the secret of the parameter? It is all same. There is only one secret of the parameter. My job is to very simplify things for high returns. वॉरेन बुफे का स्ट्रेटजी, यस, सो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें 5% EPS ग्रोथ एवरी ईयर होना चाहिए लास्ट 5 इयर्स में। ओनली 2 स्टॉक्स विल टेक। जाहिर जी, Got it. Understood. पैरामीटर दिया हुआ है, all the parameters are given and these are the only parameters we study and we take the stock. Okay. And the return is, so it is guaranteeing me that अगर आप 5% only take those companies जो last 5 year में is having EPS growth of 5%. And the ROE and debt वो तो है ही, ROE तो है ही, standard है। The only difference is that if I have QBS and I take 5-year return of 5 years, I will make money. Okay. Sir, one question. So if I'm looking for a 3 months rebalancing thing, if I want to choose my own stock or something with the more screener with sales, with sales, QBS and AGS. Okay, I'll say QBS and AGS. Should the P ratio also should be taken into account, or can ignore? Ignore. You take P ratio विकास दिखा दे strategies. विकास P ratio का बनाया है क्या? हाँ। Okay, P ratio strategies दिखा दो भाई। These are P ratio strategies. Only mid cap it's giving 100%. In large cap it's giving 60%. In small cap it's giving 80%, and in multi cap it's giving 80%. Only in mid cap. In mid cap the QBS is 17 and P ratio less than 20. Okay. So mid cap में सिर्फ अच्छा काम कर रहा है, सब जगह काम कर रहा है, but the returns are not so good. And mid cap में the risk is very high. The risk is very high, yeah. Index has fallen 44% and the strategy has fallen 63%. So low P ratio का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? Low P ratio में जब बाजार गिरता है, so low P tends to fall a lot actually. See, what is low P? Low P means market is not giving value to those companies.
You know, so when the market falls, it is slightly dangerous strategy. Huh? Low P. People think low P means कि मेरा जब बाजार गिरेगा हम बच जाएंगे. ये opposite है. When you buy low P or low buy company, वो ज़्यादा गिरता है market में. This is another very powerful thing people don't understand. Myth. Biggest myth. Sir, also the statistics what you showed me also, very good stocks is very good quality stocks. तो आपको P इतना कम में मिलेगा भी नहीं है. So anyway, P makes no relevance if I'm looking for a 3 months balancing strategy. It is no relevance. Silly. Yes, sir. I got it, sir. So ये जो P, that is why all the investors are using P and never making money in the stock market. Sir, this is probably I can say that's a very effective technique. So even I got. This is a very effective thing, which I saw that is the essence of today. P, wrong with a wrong myth. Low P means better. सर वो जो वॉरेन बफे स्ट्रेटेजी है ना, हाँ, उसमें जो स्टॉक आएंगे वो ईयरली आएंगे क्या? एक साल में एक ही बार? बैलेंसिंग है, राइट. यानी एक साल में एक ही बार आएंगे? एक साल में आपको चेंज करना पड़ेगा हर साल. वो जो 5 साल वाला है उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, वो 5 साल है. हाँ हाँ. Anybody else? Where will you get AGS score? I'm not getting it in the app. दिखा दे भाई इनको. Yeah, AGS score is available on each stocks. So whenever you go for any stock page or दिखा देना बेटा, दिखा दे. yeah, like any stocks you want, any stock. कोई भी बोलना, रिचार्ज करना, विकास कर लेना. Okay. In the app, where it go? Where you're seeing this particular on the search button. On the search button, click on search button. Type the company. ट्रेनिंग नहीं लिया है क्या मिस्टर मोहंती प्रतीक लोग से? And no, 1 second. If you go to value stock, the left side, then check the quality of your stock. Stock. वो नहीं. विकास दिखा दे, फ्रंट पेज से दिखा दे. Yeah. Go to. ऊपर में क्लिक करिए, ऊपर में. Yeah, coming in front page. अच्छा, that search stocks. हाँ, search में करिए, right. So there you put suppose one stock, let's say Pidilite. Pidilite कर विकास, तुम भी कर दे Pidilite. हाँ. अच्छा, then there is a details given about the recommendation stock by Alpha Generator Score. Yes, AGS है ना, Alpha Generator Score. Or this you go one by one each stock we have to find. Whatever your portfolio stock is there, we have to go one by one and then take this Alpha Generator Score. तो एक साथ करना है, वो भी हो जाएगा. But it is 1 by 4. So 1 by 4 is not good right now. So 1 by 4 is not good. It should be. अभी हम लोग उसको 3 कर देंगे. 3 by 3 is the best. 3 by 4. 3 by 3. We are going to change it. We were just testing it. We are going to make it 3 by 3. 3 by 3 is the best. And what out of 20? That is not there. Out of 20, I said 14 है. नीचे देखे. थोड़ा नीचे है नहीं क्या? Out of 20 नीचे है. नीचे लाइए उसको. कर्सर को. We'll also add this 20 above. देखिए नीचे है. देखिए मिस्टर मोहंती. हाँ 20. हाँ. Quality business score of this is this. In that some few lines are there. In that you have to go through it. Am I correct? देखिए ना, मैंने किया ना, नीचे कर्सर देखिए. बिकॉज़ ऊपर फिर कर्सर लेके का. देखिए मैंने कर्सर को सिर्फ नीचे कर दिया. आप भी कर्सर नीचे कर लीजिए, बस थोड़ा सा नीचे. अच्छा, कर्सर नीचे करना. Okay. Yeah. 10. Right, 10. Very good. 20. So 14 is 13. 14 is very good. Okay. 3 by 3 is very good. 16, 17 is very good in QBS. This is how if you use the app, you'll always come across good stocks which will give you good returns. Okay. Good. Thank you. Sir, now after the change, it will be instead of 4 quarters, you will replace it with 3 quarters. 3 quarters. That is even giving better returns. So we keep testing models for future. So whenever we find better returns, we keep upgrading that.
Okay. Great. So more we test, the more we keep upgrading, so that you guys can just go simple. This stock will give me return because it has been tested. Okay, because go to the valuation. तो उनको समझा देते हैं. So valuation अच्छी है, but valuation is just an idea. It does not give you very good returns. But जब भी आपको valuation सिखा देते हैं थोड़ा देर, what are the different ways to value? Okay, so latest P ratio तो समझा दिया आपको, आगे बढ़ो विकास. P ratio आपको बता दिया, उसका एक practical example बता दिया. What is the importance of P? Large cap में कैसे काम करता है, कैसे काम करता है. So P does not give you very high returns. So आप थोड़ा सा careful होके invest करिएगा. Now P is not a very good return model for us, you know. And I have listened to Saurav Mukherjee and many great people. They don't use P much because it does not give them a very good return. And पूरा दुनिया P करता है, कोई return नहीं होता. They struggle actually to generate the returns because you have tested it, doesn't work. Next ये है P. So for every, हम लोग देखते हैं we are taking out, you know, we take out from P, we take out the price of each stock. Okay, so अगर आप देखेंगे ये P ratio है, तो usually हम लोग हर stock का 15 से एक price निकाल लेते हैं. So 15 is 4650. ऐप में दिखा दे विकास 4650. अब बोर्ड पे दिखा दे. चैंपियन है वो, डरता नहीं है. गुड आजा. Yes. The 4650 as per the earnings of the company. So आपने 15 का क्यों P multiple लिया है? This I just want to understand. Yeah. Because according to the teachings, 15 is supposed to be as per Graham. Yeah. Graham uses 15P from last 50 years. 15 is considered the lowest, where they can say that okay, ये company का इतना minimum तो उसको valuation मिलनी चाहिए. Okay. तो इसीलिए हम लोग 15 लिए हैं. वो भी दिखाएंगे. Graham use करता है 15, इसीलिए हम लोग 15 से लेके calculate किया है. As it is an opinion, right? Right. तो एक लेके बनाया हम लोग ने approximately. आपको पूरा समझिए, फिर आपको समझ में आएगा the strategy. तो एक 15 से हम लोग ने निकाला. विकास ऐप में दिखा दे बेटा. हाँ दिखा दिया. नहीं दिखा मेरे को दिखा. अच्छा. देखिए ये देखिए, these are the different ways मैं आपको भी सिखाऊंगा. You have to take out the valuation as per sales. इसका 1962 आया है. फिर price for as per book value 1065 आया है. ठीक है. फिर 465 आया है. तो हम लोग 5 रकम से valuation निकालते हैं और उसका average जो है, ये पांचों का average is 3224 intrinsic value. Okay? और जो भी कंपनी high quality होती है उसको हम लोग 3 times उसको value करते हैं. We give them a valuation of 3 times. So हम लोग देते हैं कि what trade the stock will be overvalued, what trade it will be fairly valued, and what trade it will be undervalued. So these are our opinions, but ये हम लोग अच्छा काम किया है ये चीज. So definitely a bought at any time at 9,670 rupees is a fantastic buy. और हरेश जी हम लोग ने ये 1500 स्टॉक के लिए किया है. Okay. So we are the only one. पूरा उसको automate कर दिया है पूरा concept को. Everything has been automated. There is no. So the intrinsic value multiplied by 3 times will be the overvalued price, right? 3 times because it's a companies are above 18. We give them 3 times valuation. Okay. From the intrinsic value. Okay. The intrinsic value is 3224. Okay. Undervalued price we will give 3 times because the quality is very high. So we give them 3 times. Okay. And the quality is low, below 10, we only give them 1 time. 1 time, okay. We change the valuation as per the quality. Yeah. How about the fairly valued and undervalued is calculated? दिया ना, तो दे तो दिया, सामने तो दिख रहा है, देखिए. No sir, but how it is derived, I am asking. Derived means, so basically if it is below
3 times price, then it is Okay. undervalued. 4 times. If it is 4 times above, it is overvalued. Overvalued. Okay. And between 3 to 4, it is fairly valued. Okay. So indirectly, it is like a 15 multiplied by 3 is 45 P multiples. 45 to 15 into 4. 45 to 60 No. multiples. 45 is only the P. हम लोग सबका लेते हैं ना, अभी पांचों का सिखाएंगे. अच्छा. Average. It's average. अभी मैं को Average of all Average the. है. सबका अच्छा, average. Yeah, it's average. Okay, okay. Average of DCF Graham earning book value sales. Okay, okay. उसका एवरेज है 3224 देखिए ऊपर में. फिर आपने मल्टीप्लाई किया है. Obviously, पहले तो मैं Yeah, उसका सबसे निकाल रहा हूँ, then I'm फिर क्वालिटी के हिसाब से उसको वैल्यू दे रहा हूँ. Higher the quality, higher the valuation. Okay, okay. You know, एक मिनिमम निकाल लिया पहले कितना मिनिमम होगा, और फिर उसको एक वैल्यूएशन दे रहे हैं as per the quality. Everything cannot get the same valuation. Na? Quality gives the valuation. Yes, yes. Perfect. You know, तो मैं उसको higher valuation दे रहा हूँ. So everything above 18 gets a valuation of 3 times to 4 times of the intrinsic value. Okay, so ये थोड़ा this is the thing, but we have checked इससे returns से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये इसलिए करते हैं कि जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं ये देखते हैं, बट इससे कोई रिटर्न में फर्क नहीं पड़ता है. ये भी मैं सबको क्लियर कर देता हूँ. रिटर्न्स आर क्वालिटी. अगर एक बार क्वालिटी डिसाइड कर लेंगे, तो अगर आपको रिटर्न्स चाहिए तो ज्यादा वैल्यूएशन में फोकस करेंगे, रिटर्न नहीं मिलेगा. बट ये इसलिए देते हैं कि अगर कभी भी 9,600 रुपया में अबॉट मिला, you should sell your neighbor's house and buy abort. This is like, you know, just sell everything, you know, and take loan and buy the share, buy abort at 9,600. जैसे रिलायंस है, मैं आपको रिलायंस लगा दे विकास. अब रिलायंस को हम लोग क्या वैल्यूएशन देते हैं, क्योंकि वो अंडर उसका जो क्वालिटी है खराब है, उसको हम लोग वन टाइम वैल्यूएशन देते हैं, बिकॉज इट हैज हाई रिस्क. तो अगर देखेंगे, आई विल बाय रिलायंस अंडर वैल्यूड बिलो 1467. तो मैं रिलायंस में 1400 रुपया में ही मेरे को लेना है. मतलब अगर बाय चांस रिलायंस जोर से गिर जाता है तो 1400 रुपया इज गुड, बिलो 1400 इज गुड रिलायंस. So can we take an example of Muthoot Finance, which the neighbors selling neighbor's house will see it yourself. ना मैंने तो आपको दिखा दिया, you can see it yourself. आप खुद देख लीजिए ना सर. No sir, for the benefit of everyone, just Muthoot Finance कर दे भाई. Muthoot Finance is highly correlated with gold. It is undervalued. लेना ही चाहिए. इसलिए I keep telling buy. It is recommended value. It is undervalued right now. But you have to understand why it is undervalued, because of the because it is highly correlated with gold. So fund managers थोड़ा उसको valuation नहीं देते हैं, but मैं थोड़ा दे रहा हूँ. ये मेरा opinion है. You know. So it is undervalued. That is why I keep telling it. I don't know if you've heard in all my stories I said buy Muthoot, buy Muthoot, buy Muthoot. Have you heard or not, Mr. Venkat? Yes sir, yes, that's right. Okay, so let's understand the 5 valuation before we end the day. But ये इतना रिटर्न जनरेटर नहीं है, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी वो प्राइस आ जाए तो आप सब कुछ बेच के वो शेयर खरीद लीजिए. So that price gives you that ये undervalued हो रहा है, इसमें खरीद लेना है मेरे को बस. But again, जिसका QBS अच्छा है वही खरीदना है. Okay, next. तो बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू का हम लोग दिखा देंगे. अगेन बुक वैल्यू इज कैपिटल प्लस रिजर्व्स. उसका एसेट दिखा दे बेटा. नेक्स्ट. अबॉट का अगर आप देखेंगे, द इक्विटी शेयर कैपिटल इज 2400 and total book value is 2432. Next slide.
divide by number of shares. This is the formula. So total number of the book value divided by the number of shares, you get 1065. 1065. Because दिखा दे 1065 वहां पर ऐप में. So basically it just gives me idea, कभी कोई undervalued हुआ तो उसको ले लो. तो 1065. Okay, so इसका average लेते हैं हम लोग. So we take out. Next है price to book value. Next slide, because so this is the balance sheet figure. ठीक है, next कर दे because next कर दे. Benjamin Graham, father बोल रहे हैं, guru of Warren Buffett, is also the father of value stock investing. He has created a valuation formula, which I will show you. Next slide. So his formula is square root of 22.5. Now what is this 22.5? So he says 15 PE and 1.5 PB ratio. Okay. So how do you calculate 1.5 PB ratio? Because पिछले slide में 1.5 PB ratio. So PB ratio is current market price divided by book value share. So 14.77. Right? Let's go back, Vikas. These are all in the app. I इतना आपको देखने की दरकार नहीं है, आप लोग confused हो जाएंगे. But my duty is to at least show you the how many things do we see. But इससे ज़्यादा return नहीं मिलता है, क्योंकि बाजार बहुत कम गिरता है, like COVID. It is just an idea. Again, I'm telling you, this does not generate returns, friend. But you should have an idea of valuation. That everything has certain valuation. So book value per share, EPS into book value per share. So calculate करके दिखा दे guys. So 22.5 square root into 310 into 1065. Book value per share निकाला था 1065. 3 and 10 is EPS. So it becomes 2725. So this is another way to value a company from the balance sheet and profit and loss account. Okay, so we use that also as a problem. I'll show you 2725. 2725. Okay, now we will show you price as per sales, valuation as per sales. Kenneth Fisher hai, he manages $120 billion. He was the one who started price per sales. Go ahead, Vikas. Next, how do you calculate dikhana, Vikas? Okay, so total number of last quarter sale, number of shares. So 1962. So total number of sales of last 4 quarter divided by number of shares is 1962. ऐप में दिखा दे 1962. So sales से ले लिया valuation, profit से valuation ले लिया, book value से book valuation से valuation ले लिया. Okay, and then the final is valuation as per DCF 5718. ये थोड़ा complicated है, ये हम लोग करते हैं simple तरीके से. There are thousands of ways, but I find it very simple. Again, it's an opinion, so I make it very simple. How do we do it? Next slide. So सबसे पहले you want free cash flow जो available है ऐप में. You want the growth rate. तो हम लोग उसका 5 साल का growth rate निकाल लेते हैं कंपनी का. We take the discount rate at 6% क्योंकि this is the FD rate interest and 10-year bond rate is about 6% in the market. Okay, तो हम लोग सबको discount 6% से कर देते हैं. हम लोग we don't use the weighted average of cost right now because सबका weighted average से करने में होता है, तो we just take at 6%. Okay, and we take the number of years is 10 years because the bond values for 10 years, so हम लोग ये use करते हैं. हम इसको दिखाते हैं how do we calculate. Next slide. अगर आप देखेंगे इसको calculation कैसे करते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो free cash flow of Abbott is 487 and 6110. because ऐप में दिखा दे
580 48.5 ये हमारे ऐप पे मिल जाएगा। सर इसमें टर्मिनल वैल्यू इफ यू कैन ऐड आई थिंक वुड बी सब ग्रेट। कर लिए सर हम लोग, सब बहुत कोई अच्छा। काम नहीं करता है सर रिटर्न में, हम लोग सब कर लिए। ये सिर्फ जब बाजार में बहुत मंदी आती है ना, जब काम आता है 10 साल में एक बार। राइट। डे टू डे में कोई काम नहीं आता है सर वैल्यूएशन में, देख लिया आपका क्योंकि जितनी अच्छी स्टॉक है वो आपको हरदम ओवर वैल्यूड मिलती है। राइट। तो वो आपको काम नहीं आता, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल टूल। डे टू डे में इट इज नॉट यूज, आपको भी मालूम है काम नहीं आती, सिर्फ ये कि जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज के लिए लोग करते हैं, बट इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल टूल फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बट ये सिखा रहे हैं कि वैल्यूएशन कभी बाजार गिरे कोविड की तरह तो उनको अगर बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले तो उनको शेयर लेनी चाहिए। 10,000 रुपया में ये, 1400 रुपया में रिलायंस, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि इस रेट में हम ये भाव ले सकते हैं, बिकॉज उसका कोई वैल्यूएशन तो है, सब चीज का कोई ना कोई एक मिनिमम वैल्यूएशन होता है, तो उनको आइडिया होनी चाहिए। देखिए फिर ये 548 ले लिया, सब आपको मिल जाएगी मेरे ऐप से। गो देयर, वापस गो बैक। ओके 6% डिस्काउंट रेट है और इसका 5 ईयर का ग्रोथ है 21%। सो दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू नो एक्सेल शीट। तो वो व्हाट इज डिस्काउंटिंग कैश फ्लो हम लोग कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है कि उसको 21% से ग्रोथ कर दिया और 6% डिस्काउंट कर दिया तो 624 मिल गया। तो अगर वो उसका हर का एक डिस्काउंट वैल्यू मिल जाता है 10 साल का, तो इट्स अ फॉर्मूला। अगर आपको एक्सेल शीट आता है तो इसको कर सकते हैं, ऐप में आई में दिखाए हैं इफ यू वांट टू डू इट। तो इसका 10 साल का जब करेंगे तो यू विल गेट 12,6 करोड़ रुपीस, एंड इफ यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स you will get 5762 per share. Okay, so we tried many methodology. This works very simple to easy to understand as it's an opinion. Okay, तो 5762 ले लिया वहां पर, विकास कर दे, दिखा दे। All calculations are there, अगर आपको सीखना है तो अपना मैथमेटिक्स करके सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आ गया DCF वैल्यूएशन। ये पांचों का एवरेज अगर लेते हैं तो इट कम्स एट 3224, और उसको फिर मैं 4 टाइम्स के ऊपर ओवर वैल्यूड करता हूं, 3 टाइम्स के नीचे अंडर वैल्यूड करता हूं स्टॉक को। सो आई एम सेइंग वेरी क्लियर, अंडर वैल्यूड बिलो 9672। सो मोटा मोटी 9600 में आई विल बी पुटिंग एटलीस्ट 25 करोड़ रुपीस इन टू बाय अ बॉट। 5-10 करोड़ रुपए का बॉट खरीद लेंगे, 9600 रुपए में कभी मिला। बट दिस डजंट वर्क on a day-to-day investment. Any questions, friend? Any questions on valuation? 5-year growth, 5-year growth, Mr. Srinivas Rao. 5-year growth दिखा दे, फिर सबका 5-year growth भी दिया हुआ ऐप में। ये देखिए 5-year CAGR growth है हम सब कंपनी में। Just a second, showing. देखिए 5-year CAGR 21.96। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर ब्रह्मा राजू, F2 and MF इन्वेस्टमेंट्स। Can we get the notes of using the software? There is no notes, you have to learn it yourself, Mr. Girish Patel। बहुत सिंपल है कि यार नोट क्या चाहिए हमको समझ नहीं आ रहा। ये सिंपल है, आपको जो मैं चीज सिखा दी, उसको बटन दबाइए, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा ट्रेनिंग ले लीजिए मेरे आदमी से गिरीश पटेल, आपको सिखा देंगे। और सबका आई में सीखना है तो आई में जाके क्लिक करिए, नोट्स मिल जाएगा आपको मिस्टर पटेल। बट आई एम गिविंग यू अ कुक्ड फूड ऑलरेडी, बट दिस इज हाउ यू वैल्यू अ कंपनी। बट अभी देखेंगे जैसे अब जाके विकास शो कितने शेयर अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है बट ये काम नहीं करता है सर, मैंने देखा है, रिटर्न्स नहीं है। लार्ज कैप में अगर आप अंडर वैल्यूड लेते हैं आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे आपको वार्न भी करना है दैट इनफैक्ट लार्ज कैप में हाई वैल्यू में रिटर्न ज्यादा है, अंडर वैल्यूड में रिटर्न कम है। यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू आर प्लेइंग अंडर वैल्यूएशन इन लार्ज कैप।
You will not get very good returns. देखिए अंडर वैल्यूड का लार्ज कैप कर दिया क्या? लार्ज कैप किया, अंडर वैल्यूड किया. ओके, तो औरबिंदो है, मुथूट है, HCL है, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट. ओके, हम लोग ने चेक किया था, रिटर्न्स बहुत कम है. मतलब पहले का मतलब 8-10-7-8% का रिटर्न था ना विकास. लो पी का क्या रिटर्न है? Low P return. लो पी रिटर्न इन लार्ज कैप, QBS. Large cap is 60%. ठीक है, डिसेंट रिटर्न है. अगर आपको लो पी भी लेना है तो डिसेंट रिटर्न है. 20 QBS, 20 P, 12% का रिटर्न है. तो डिसेंट रिटर्न है 12% का. तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेस्ट एवरीथिंग, देन वी चेक कि किसमें रिटर्न्स आ रहा है, किसमें रिटर्न्स नहीं आ रहा है. बट ये बहुत लो रिस्क स्ट्रेटजी है. 12% रिटर्न मिलेगा, बट अच्छा स्ट्रेटजी है. 6 शेयर ले सकते हैं आपको लेना है. औरबिंदो, मुथूट, HCL, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट. लो पी है, अंडर वैल्यूड है, बट प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 12% रिटर्न. Yes, very low risk strategy. बट वेरी लो रिस्क स्ट्रेटजी. कितना रिस्क है विकास? क्या रिस्क है? Yeah, the index has fallen 44% when in fall, and the strategy has fallen only 10%. आप देख लीजिए. And in return also, the index has fallen 100%. Sorry, given positive return 100%, it has given 71%, 30% less than the index. ये थोड़ा ये दिस इज नॉट अ बेंचमार्क बीटिंग. इट इज अ वेरी सेफ टाइप ऑफ. ये बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा. हाँ, तो आपको ये समझना होगा कि हमको 10-12% का रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है. तो आपको OBS से हम सिखा रहे हैं भैया, FD से बेटर रिटर्न चाहिए, 6 स्टॉक में लगाइए, FD से अच्छा 10-12% का रिटर्न मिलेगा. I think the winner is QBS and AGS, sir. तो सर अलग अलग स्ट्रेटजीज है ना, बट देयर आर मेनी पीपल जिसको रिस्क नहीं लेना है. ऑल आर ग्रेट स्टॉक्स, अंडर रिस्क नहीं है ना सर. अभी समझे बाजार गिरा, इसमें से 10% रुपया लगेगा सर. Correct. ये भी तो आपको समझना होगा ना. Correct. You have to understand, I have to train you from all perspectives कि ठीक है रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी तो कम है. अब राजेश जी इज वेरी हैप्पी, उनको 10-12% में, उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 6 स्टॉक पे लगा दो पैसा. 1/4 risk. Yeah. Sir, but that is not true for the low P. For low PE in mid cap, you see that basically the. हाँ, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ मिड लो. इसीलिए तो अलग अलग कैप का अलग अलग स्ट्रेटजी है. Correct. That is So what this works. that is why I'm giving you the what works. Everything same thing. Everything works separately. Large cap has a completely different philosophy to work. Mid cap has a different philosophy to work. Small cap has a different philosophy to work. सबका risk return सब अलग अलग है. Okay, sir. This is another thing which you need to learn, which people don't understand. They think, oh, same strategy like golden triangle, Mr. Girish Patel will use in large cap. It will work. But वो small cap में use करेंगे, उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. You should understand this. बाजार गिरेगा और सब गोल्डन ट्रायंगल खत्म हो जाएगा सर. हम लोग ने बहुत किया है सर. Every cap has a different risk. We should know that. And this is what people don't understand, and they lose a lot of money. तो अंडर लार्ज कैप में 12% रिटर्न में क्या खराब है? रिस्क सिर्फ 10% है. अभी इतना बाजार गिरेगा, आपको मालूम है कोई ज्यादा रिस्क नहीं होगा. लार्ज कैप में लगा दीजिए. बट अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करने पड़ेंगे. Sir, I think so everybody is quiet because you must have heard this for the first time in your life. How many are hearing this for the first time? It's a completely new way to see the stock market. How many people agree? I am hearing this for the first time. You know, different strategies for different large cap, mid cap, small cap, and you know, different funda that low P means low return also. First time I'm hearing and I'm seeing also. Not only hearing. Thank you, Pratik. Thank you.
And another thing, what you said nicely is that, like, one thing I thought that earlier my myth was that, okay, if I put AGS, it works everywhere good, or the PE. So it works differently for different things. Yes. This is the learning. Yes. The same thing now, doesn't work everywhere. So now I really respect the strategy, sir. Earlier, to be very frank, I kind of now I really feel that the appreciation that comes, that the thing, oh, strategy mein kya hai? Now I got the answer. So it's not very difficult, because you might have considered many aspects in maximizing a return so that it comes as an intrinsic value towards the strategy. Now I have a respect for the strategy. Thank you, Mr. Venkat. Haresh ji, any view? आप तो इतने साल से market में हैं. Are you understanding what we are trying to share with you? Yes, Shailesh ji, very much. सब कुछ अलग है सर. Small cap एकदम अलग है, large cap एकदम अलग है, mid cap एकदम अलग है. नहीं, this is really fantastic. खाली what exactly I can tell about the calculation of intrinsic value, as you said very clearly that it is an opinion. Valuation is an opinion, but there are the ways where you can tweak the formula, and you can be close to market price. So we can think about what I'm saying. But actually वो day to day में काम तो आता नहीं है ना सर. इसीलिए I spend only 10-15 minutes because it is not a practical thing. Valuation is only when the market falls. You should know कि यहाँ पर हमको घुस जाना है. Yeah, that's it. Sarab ji, day to day it is not applicable for people. Sir, lekin I'll tell you one thing. My experience says that, because I have done more than 3,000 valuation. Let me tell you. So what we do actually, we use the income approach, market approach. Okay. So when we use these approaches, so इसमें मैंने देखा है कि we are almost close to हम लोग market. It gives an indicator that, okay, fine, this is undervalued, overvalued, and it is somewhat realistic. It's not that because हमने यहाँ जो formula use किया है ना DCF में, so I think so we have not considered the terminal value. So terminal value, if you add, maybe you can tweak the formula. Maybe we can have a separate call for that. कर लेंगे sir. Anything, Rahul Pati? Yeah. I could see a Rahul Pati. First time I'm able to see you. Rahulapati. Yes, Rahulapati. You want to share something? I can see for the first time your video. Many people have not even spoken. Rahulapati, Vana Krishna. Any questions, friends? Time has come to end the day. Any questions? Any questions on understanding? What is the return? Sir, I have one question. Sorry. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए please. Shailesh ji, on mid cap and small cap, what strategy we should use? Same means high QBS, high AGS, or है ना यहाँ पर देखिए ना, आप शो डी में विकास दिखा क्या strategies mid cap में. Mid cap में you can use 16 QBS with 3 AGS is a good strategy. Okay. QBS 20 with sales you can use. देखिए मैंने दिखाया ना इसका. QBS with EPS you can use. In fact, QBS with low P ratio is also good, but the risk is very high. Any low P strategies, your risk of falling market is very high. Because low P में क्या होता है ना, जो शेयर बहुत खराब होते हैं ना, उसको और बेच देते हैं. So that is the risk of low P strategies. Low P is a very dangerous strategy in falling markets. So these are the strategies you can use. Small cap में आप same QBS, AGS,
QBS with sales growth, QBS with EPS growth. Hello. Does it answer your question? Sir. Yeah. Yes, yes, sir. Yeah. Yes, and small cap में sir? ये मैं small cap भी तो दिखाया आपको. अच्छा ये small cap. QBS with 100 AGS अच्छा है strategy. पर small cap में ध्यान करेगा, देखिए risk देखिए, मंदी में अच्छा गिरेगा. हाँ. मंदी में it will fall a lot, so you have to be careful. These are 5-year assets. थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है, चल जाएगा मतलब, but it's a good strategy. Hello. Yeah. Sir, in shareholding pattern, if anything will go up and down, nothing. कुछ नहीं होता. We have checked. It has no relation to returns. Sir, actually, during result time, some of the if internal buying is there, if shareholding pattern in that, usually the price will move up. No? That's why I asked. No relation. We have checked. You can continue if you make money. So, but in app you are giving a shareholding pattern percentage of holders. But in that, usually we can, how we can check? Can you show that if we, what percentage we quarter wise by quarter, if we, any percentage increase decrease, can we check that in app? We are checking. We are given for F2s and everything, buddy. We have given, na? Shailesh, this what my experience says that the low floating stock and high quality stock, I'm talking about combination of low floating stock and high quality. The correlation is there actually. काम नहीं करता. विकास proof कर दे भैया जी. कोई काम नहीं करता. विकास proof कर दे. Doesn't work. These are all myths. No return. दिखा दे विकास. Low floating दिखा दे. Yeah. Low floating stock means promoters holding 75%, and the public holding is we made that less than 20%. Yeah. Just दिखा दे. Where it is, I have to remember. Let me ask from Harshul. Yeah, give me a minute. वो गिरता भी जब है ना, जब उसका खराब होता है, गिरता भी वैसे ही है. Very highly risky strategy. No, I'm talking about the quality stock. I'm not talking about say high QBS score. What you are talking, I'm saying, and within that the QBS score, if you see the low floating stocks, where MRF है ना, MRF तो एक है. Sorry. MRF is one of them, right? MRF नहीं बोल सकते because promoters holding is not 75%. Promoters holding is very less. MRF promoters holding is around 30-35%, I believe. Because 75% का लगा देना भाई. Yeah, showing. Promoters holding 75% and public shareholding, maybe less than 20%. Because मैंने इसमें बहुत कमाया है वो सब स्टॉक में. अभी करते हैं ना, आपके सामने करते हैं ना, स्ट्रेटजी बना के 2 मिनट लगेगा मेरे को सर. I have so much of data. Yeah. You are very sweet. Yeah. आप बहुत rich हो with data. सही में I really appreciate lot of data you are having. Sir, I have a question. On the recent high and the correction, when you say the recent high, you take like 1 month, 3 months or something like that, or you have any specific thing when you term? There are 107 companies which has promoter holding more than 75%. अब QBS score भी देखना. Good stock. I'm not talking about bad stock. Yeah. QBS score how much? Greater than 18? Greater than 18, yeah. Yeah, there are only 15 stocks. Okay. There are only few companies which got listed. 5-year, 1-year return average was 28%, and 5-year we can't judge because, and 2-year average was 58%. Mm-hmm. Stocks are HDFC Life, Sheela Foam, HDFC AMC, GM Pfaudler, Rights. Again, PSU is one. PSU निकाल दो यार. PSU तो you don't trust यार. PSU other than PSU
Yeah, these are all. Yeah. If you remove PSU. Remove PSU. Yeah. 2-year return is 62%. Okay. And 1-year return is 31%. Okay. Good. Thank you. Because I have a question. The recent high and the correction, can I say that what was I mean, you take the recent high means that like last 1 month high or something like that, or exactly how do you take this recent high? Yeah, it's last month high. Just Harshul, do you remember a recent high we have taken for 3 months or 2 months? Yeah, I will just confirm and get back to you. Yeah. I think it was 2 months. We changed it for 2 months. Okay, so from that 2 months high, you calculate the current value and then you'll evaluate the correction, right? Yeah, exactly. Yeah. आप मुझे स्टॉक का नाम दिखाएंगे जरा? Can you just scroll? Scroll? अच्छा एक मिनट. Yeah, नहीं दिखा. Okay, fine. यही stocks है. These are the stocks, right? Okay. L&T Technology, very good. Comfort, very good. Whirlpool, PM India, Sun TV, Webco तो delist हो रहा है शायद. I think so. Yeah. HDFC Standard Life, Sheila, HDFC. I think that's good stock, yeah. Yeah. Very good stock. QBS से अच्छा stock. Yeah, QBS भी अच्छा है. Yeah, QBS is good. Fine. Thank you. Thank you. Yeah. Anything else? So anything else, friends? जो discuss करना है अपने को भी. We are fine. Because can we see the sector P at a glance, or you should see only the individual stock? Individual stock. I can show you me. Yeah. These are sector P. So let me make it from largest to smallest. Yeah. So these are sector P. You can take a picture of this. Okay. So at a glance you can see, and you can also see the number of stocks in that particular sector. Yeah, great. Because anyway, you are giving the sector P anyway individually in the stock. When I go there it always gives the sector P. But at least as a glance, this gives a good idea. Yeah. So we can also put a sector P in the stock screener as a filter. No. Right now, I think we don't have that. We don't have. Okay, because otherwise, how do I know this? Which 27 stocks are? True. Yeah, that's it. Maybe this would be a suggestion if you could add it in the filter. Just before sir come, let me give you how did we came to this, all those. Would you like to know the journey? How do we came to all these parameters? Yes, very much. Sure. Only Venkatji or anybody else? Only Venkatji. Sharing is always good, no? Yes. Yes, Because we you would would definitely like to Only know increase our knowledge. how you arrived at this formulas. Yeah, with these formulas. So you must have seen that not Warren Buffett, basically Benjamin Graham, Kenneth Fisher. So what happened? Sir started studying all those books. So he keep himself very busy in studying all those books and all. So even I had to read those books in office. There were around 30 plus books of financial gurus, all great financial gurus, and his focus was mostly those who have made this. There are many financial gurus who only speak about do this, do that, but they do not have any track record. Neither they manage fund. So he came up with a very good agenda that okay, I will only study to those fund managers who are managing funds, who has been successful in making returns for the clients or making models. So what we did, we started I think 4 years back. So what we did, he started reading those books, and out of those books, we got the understanding earlier. Before reading the book, we got the understanding, okay, sales is working,
So we were confused whether we should take sales growth or operating profit growth. We were confused with whether to take a net profit growth or to take EPS growth. So what happened after reading those books? After reading those books, what happened? We started studying that, okay, we need to take sales growth. So these understanding which you guys are getting, it's not out of any particular individual study. It's a study of top people, top investors, top financial gurus of world, not even only India, but of world. So combining those strategies, those parameters, then with the, as sir has said, that we are kind of data rich companies. Exactly, we are a data rich company. The way sir has taken data from so many vendors. So what happened? We combined those. We use that data, we use that parameters on this data we have. We use that, and we came up with this strategy and model. So this has helped us a lot. It has shown us how return can be generated. Yeah. Hello. Yeah. So good friends. Final questions. अच्छा लगा आपको? So valuation अच्छा है. Valuation is just to get an idea and feel of the market. But main तो सर हम लोग को आपको returns करना सिखाना. मुझे practical training देनी है आपको कि पैसा बनता कैसे है सर. End of the day पैसा कैसे बनता है वो बहुत important है. Okay, that is the key element जो आपको समझना पड़ेगा. There is a final aim. Yeah. So and we पैसा भी बनाना है और रिस्क को भी कम करना है. तो हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया है सर वैल्यूएशन में, ये पी वो. बट एंड ऑफ द डे सर पैसा नहीं बनता है. एंड ऑफ द डे जब पैसा नहीं बनता ना, जब ये ट्रेनिंग करते हैं ना सर, वो लगता है यार ये पैसा तो बनता नहीं. व्हाट इज द पॉइंट? सो एंड ऑफ द डे आवर फोकस इज दैट यू शुड मेक मनी. You should make money. That is our friend. Money is made from momentum, AGS, sales growth and EPS growth. ये चार चीज बहुत अच्छा पैसा बना के देता है. तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं है ये चार चीज का, और ये सब चीज आप QBS में ऐड कर सकते हैं, तो QBS से एटलीस्ट यू नो क्वालिटी है, एंड देन यू ऐड दीज फैक्टर्स, you'll automatically understand that the chances of making money or those stocks going up in future is higher, right? So that is what is our knowledge. Rest to sir, you know. Yes. So किसी भी market timing पे हम ऐसे invest करें, you know, it does not matter, no? Does not matter. These are all time tested philosophies. क्योंकि अगर शेयर 3 महीना में बढ़ा हुआ है तो उसका अपॉर्चुनिटी आ रहा है. आप देखोगे लास्ट 3 महीना में कोई लार्ज कैप शेयर बढ़ी भी है, और अगर आपको मालूम है 3 महीना में बढ़ा हुआ और उसका QBS अच्छा है, आपको मालूम है इसका रिटर्न देने का चांस बेटर है. सो वी आर मेकिंग थिंग्स मोर इजियर एंड इजी फॉर यू, यू नो. क्योंकि क्या होता है, लोग क्या है स्टॉक खरीद लेते हैं. जैसे लोग खरीद लेंगे ITC, बोले यार ITC बढ़ता ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, या वर्लपूल. सो QBS खरीद लेते हैं, रिटर्न नहीं मिलता है. तो उसमें क्यों नहीं रिटर्न मिलता है वो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ. Yeah. That is the key element. So ITC का सर एक और पैरामीटर है, ESG की वजह से इसे भी रिटर्न नहीं आ रहा है, just because of ESG. There is no return. मतलब there is no momentum. मतलब people are not interested in the stock. So when people are not interested in the stock, that means something is wrong somewhere, जिसको आपको avoid करना चाहिए. So it's a balance, sir. Please understand, AGS and QBS is two sides of the same coin. If you focus too much on quality, you will lose on the return. And if you focus on too much of return, then there is a risk is very high, because जब बाजार गिरेगा तो बहुत loss होगा. I'm trying to teach you a balance. Yes. Sir, I have one question about the free cash flow and the debt. So basically, is this both are two sides of the coin? Yes. Is that the company which is having free cash flow, debit तो होगा ही नहीं? They will not have debt. They will not have debt. Correct. Why they should borrow? Correct. Obviously.
Free cash flow means that low debt companies. Okay. Okay. So for a small investor like me who sets aside a small sum, say about 1.25 lakhs a quarter, fresh each quarter to invest. So, I mean, which strategy do you think is the best to choose? What is your expectation of returns? Sir, expectation of return, I mean, I'm okay with the quarterly review or quarterly, like. तो then you for large cap है ना मेरा 36% आप ले लीजिए स्टॉक्स में आ रहा है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए. Okay. सर हम लोग के स्ट्रेटजीज में कितना इंटेलिजेंस अब आपको समझ में आ रहा है ना. व्हाट इज आवर स्ट्रेटजीज? वी आर फोकसिंग अ लॉट ऑन रिटर्न्स. There is no doubt about it. तो वो अब आपको ये समझना होगा कि वो स्ट्रेटजी में रिटर्न्स क्यों आ रही है. उसमें कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा किए हैं इसीलिए रिटर्न्स आ रही है. बट हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहे. Only the best part is that for an investor like me who sets aside a fixed sum, say about 1.25 lakhs a quarter, at least for with your strategies, the losing of the previous money is highly बहुत लो है. हो सकता है एक बार आपको 10-15% बिकॉज ऑफ मार्केट चला जाए, बट I don't want to say a word like guarantee. But no, it's not. But I'm telling you, the way we have worked hard, we have very high chances of making money with us. One feels very secured about it. Yes. Yeah. वो आप जब करेंगे and after the 4-day program, people really buy. सब लोग 4-5 स्ट्रेटजी खरीदते हैं, सब छोड़ देते हैं. हम लोग का स्ट्रेटजी में पैसा लगाते हैं और भूल जाते हैं. If you are looking for that 20, 25%, 30%, we are fantastic, sir. We have all tested things in a very detailed manner. See, for trading and all, one has that knack of doing it. One can set aside a small money, one can keep on trading every day, but then secured money is here. Security is here. Yes. There you can, depend on this. Yes. Okay, friends, thank you very much. It's already 7:02. We'll talk tomorrow. 4 o'clock. Thank you. What is the agenda we're going to cover, sir, tomorrow? Again, return. There are many things to cover. Sector returns, sector leaders, which sector to invest. Tomorrow we'll be covering a lot on sector, all on returns only, basically. Super. And also the debt ratio you will cover as a concept, right, tomorrow, as a part of the exit. Debt ratio is not important. Debt ratio is already covered in free cash flow. It's not a very important concept. Don't worry. Free cash flow is more important. Yep. Okay. Thank you. Thank you, sir. Have a nice and great day.